Hello. Welcome back to All Body Blues FC, a fan channel for all to see. और हाँ, हम थोड़ा सा लेट हुए हैं आज. होपफुली आप लोगों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, बट होपफुली यू विल एंजॉय द सेशन क्योंकि यस, लॉट्स टू डिस्कस. ऑब्वियसली 2 क्वार्टर फाइनलिस्ट तैयार है चैंपियंस लीग के. वी हैव टू डिस्कस क्या हुआ था वहां पर, और मे बी 2 और आएंगे. मे बी क्या, डेफिनेटली आएंगे. आज रात को भयंकर टाइज होने वाले. वी डिड डिस्कस इन डिटेल कल, बट सर्टनली वापस से टच पॉन करना बनता ही है. बट उतना ही नहीं, बार्सिलोना फैंस स्पेशली ईगरली वेटिंग कल के लिए, क्योंकि यस, देयर इज द यूरोपा लीग राउंड ऑफ 16 टाई. बार्सिलोना के लिए ही नहीं, और भी काफी टीम्स है जो यस हम डिस्कस करने वाले हैं. उसके लिए उस्मान भाई विल बी जॉइनिंग अस फ्रॉम डेली फुटबॉल मैडनेस. जस्ट गिव हिम अ फ्यू मिनट्स, ही विल बी हियर एनी मोमेंट. और हमें चेंज करना पड़ा टाइम, बट होपफुली यू विल बी देयर राइट टिल द एंड, क्योंकि यस, वी हैव ईपीएल फुटबॉल बैक. चेल्सी खेल रही है, लीड्स खेल रही है, व्हाट नॉट, तो काफी सारा डिस्कशन है. सो यस, अगेन डू स्मैश दैट लाइक बटन एज वेल एज वो बेल नोटिफिकेशन आइकॉन. सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा जब भी हम लाइव होते हैं, and you don't need to wait for us there. And here we have Doug in the house. Doug, big up brother, hope you're well. I know you've been unwell, but yeah, hopefully you're on the road to recovery. And join the panel soon. I would hope we would have a great discussion. Because Liverpool fan Doug in the house, and great channel that he has, does great work. And so Just Viola as well. Come on, always supporting the channel. Big up to Just Viola. And obviously there's a Chelsea match coming, so we will be discussing that for sure. So stick on. We have the core gamer here. Hi Ankit, definitely hi to you as well. लेकिन कहाँ से डिस्कस शुरू करें यार? By the way, Usman भाई will be joining us. I thought let me actually first touch upon कि क्या हुआ है, क्योंकि yes, for a change we did not do the review videos for the Champions League games. लेकिन यार come on, सुबह के 4 बज गए थे और मैं सोचा यार डेफिनेटली एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ही थे, तो हम लाइव में डिस्कस करेंगे. दैट्स व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, राइट? So first and foremost, let's actually discuss this. People out there, they देखा है मैच. First of all, Liverpool versus Inter Milan. Wow, क्या मैच था! प्रॉपर नॉकआउट टाई, स्पेशली वो सेकंड हाफ. लग रहा था यार समथिंग सरप्राइजिंग होने वाला है. ऑलमोस्ट हो गया था. और वही नहीं, बायर्न म्यूनिख सरप्राइज भी था वो, क्योंकि no one expected 7-1 and what not, right? As 8-2. Come on, that's definitely too much. But Doug says he's getting there. Yes, of course. Doug certainly will be, joining us hopefully once he's fully well, and we'll plan a stream, buddy. And by the way, जो भी देख रहे हैं, हम ट्रिविया के साथ भी आने वाले वापस. Yes, fun facts, trivia, जो भी बोलो आपके, who am I and stuff like that. Hopefully next week. So by the time Doug is well again. But talking about Liverpool, well, Liverpool के बाद I don't know क्या बोलोगे यार. मतलब they have been dominating. And I know they have lost finally. आप बोल सकते हो there is a way to beat Liverpool. That unbeaten streak चले गया है. But honestly deserve करते थे. Honestly करते थे, right? Because इतने सारे बार, I don't know, it was destiny. I'm sure Liverpool fans in the house would say that it was almost that, hey, it's going to be like a scene where we are not going to score today. इतने सारे बार, I think about 3 or 4 times I remember Liverpool hit the bar or the post. तो एकदम मुझे लग रहा था ये वो रात इंटर मिलान के लिए बना हुआ है. आई नो स्टार्टिंग लाइनअप भी थोड़ा सरप्राइजिंग था. जेको नहीं खेल रहे थे. आई थॉट चलो कोरिया, जैसे हमने कवर किया था प्रीव्यू में, ही विल प्ले. बट नो, इट वाज एलेक्सिस सैंचेज. और वो ही टिपिंग पॉइंट रहा, क्योंकि यस, इट वाज एलेक्सिस सैंचेज फर्स्टली विद लोटारो मार्टिनेज. ग्रेट प्ले. लोटारो मार्टिनेज गॉट अ ग्रेट गोल सेकंड हाफ में. They should have actually, got an early goal, क्योंकि वो dominate कर रहे थे. For me, they had better chances. Despite आप बोलोगे लिवरपूल का पोस्ट लगा etc. I think game play ज़्यादा इंटर मिलान रख रही थी. So that is something that I would expect कि लोटारो मार्टिनेज takes a chance finally, और वही हुआ. And यहाँ पर the core gamer said लोटारो मार्टिनेज is shining lately. Exactly, the core gamer, that's true. He is shining lately, but it's just 2 weeks, right? So I wouldn't come to conclusions yet. It's high time that he would have shined. But again, the moment Inter Milan looked that okay, that first goal is not just that. It's more to come, because they were creating real good chances, right? And I think Alisson was good on the night as well. And that is the moment. Alexis Sanchez, who बहुत लोग बोलेंगे कि हो सकता है पहले भी रेड कार्ड मिलता. Finally, again going for a late tackle. I know उन्होंने बॉल जीता था. Again, comment below. What do you all think? That Alexis Sanchez won? Was it a second yellow? You can argue the first challenge was definitely potential red. लेकिन second challenge, momentum से he went in यार. मतलब थोड़ा unlucky है in my view. But again, I wouldn't kind of say that it is a clear shot, not a yellow.
So if the referee ever played football, it was never a yellow. Yeah, exactly. So that's what I said. He went with the flow. वो कैसे रोकता है? Breaks तो नहीं उसके पास कि रोक लेता. So I'm kind of, in both the sides, because I can understand Liverpool fans also saying that, hey, come on, as in it is a yellow in terms of the rule book. लेकिन rule book needs to be changed if that's the thing. Sushant, by the way, thank you join करने के लिए. Yes, I'm scared as Real Madrid fan today. वेल स्कैर्ड मत रहो यार, 1-0 ही है. जैसे हमने कवर किया था, दिव्यांश भाई आए थे, आयुष आए थे, वी डिस्कस्ड अ लॉट. होप आप चेक किए थे, बिकॉज वी थॉट दैट देयर इज अ चांस फॉर रियल मैड्रिड, स्पेशली सैंटियागो बर्नाबाउ. देयर इज अ फॉर्म दैट वी आर टॉकिंग अगेन, जो यू आर टॉकिंग अबाउट लोटारो फॉर इंटर, मे बी फॉर रियल मैड्रिड मॉडरिच शाइन करे. Hi everyone in the live chat and big up to my brother Ankit. Yes, Shrey Oberoi, of course, Shrey FC. People out there, do check out Shrey FC Dugout Football channel as well. And यहाँ पर कबीर बोल रहे बार्सा वर्सेस चेल्सी द सुपर कप. देखते हैं कबीर, wishful thinking, like that will be the ideal for me, right, as a content creator, of course being a Chelsea fan as well. क्योंकि यहाँ बार्सा fans I know काफी ज्यादा fan following है बार्सा की, and I wouldn't deny that, होना भी चाहिए. Best club in the world right now, Liverpool or Bayern? What do you feel? We are getting to that. Now, that Bayern performance, by the way, Liverpool, kudos. Inter got tried again. So, it was a great game of football. लेकिन Liverpool deserved it. That's my opinion. आप अलग बोलोगे, I don't know. थोड़ा लक नहीं था इंटर के साथ दोनों लेग्स में, लेकिन Bayern Munich, भाई साहब, what was that performance? Like, we all on this channel said that Bayern Munich versus Salzburg, Bayern Munich बोगी टीम हो सकती है, rather Salzburg बोगी टीम हो सकती है Bayern Munich के लिए इस बार, लेकिन नहीं. They went on, I don't know, rampage. Lewandowski, like जो लोग बोलते हैं यार एज, लाइक बंदा बूढ़ा एंड व्हाट नॉट, लाइक बहुत सारे कमेंट्स आते हैं. समर में मैंने स्ट्रीम किया था खुद इस चैनल पे कि लेवेंडोव्स्की चेल्सी को टारगेट करना चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक. यस, दैट इज हाउ गुड ही इज. वो एक अकेला बंदा है स्ट्राइकर में जो पूरा मैच को अलट पलट कर सकता है. दैट इज लेवेंडोव्स्की फॉर यू. इवन नाउ एक और साल वेट कर लो, वो वही रहेगा. लेवेंडोव्स्की का फिटनेस लेवल इज राइट अप देयर. And I think the game that he played, wow, what turns, those two penalties, you can say maybe Bayern Munich are lucky, but no, Lewandowski created those penalty chances. Trust me, if not for his turns, maybe the match would have been different, right? Those two first penalties, awesome play by Lewandowski. Okay, Michael talks football in the house. Michael, big up to you, mate. Well, I hope we have a Barcelona versus Liverpool Super Cup cause match would be played here in Finland. Okay, interesting. Yes, of course, Michael, being a Finnish lad, definitely would hope that, he gets to watch that. I envy you if that's the case. Let's see. Hopefully, I would take a Chelsea win. That's bottom line. Of course, Barca winning the Europa League, I don't mind that, honestly speaking. Lukaku, Werner, who will leave? Yes, by the way, हम transfers पर भी आएंगे. So stick on till the end. मैंने बोला है कि वर्नर छोड़ने वाले हैं, मोस्टली इट विल बी वर्नर सर्टेनली, एज इन दैट्स समथिंग दैट आई वुड प्रेडिक्ट. लुकाकू मुश्किल है, हाउ कैन यू ऑफलोड, लाइक ही इज अ 98 मिलियन स्ट्राइकर, इतना वेजेस, आई डाउट दैट वी कैन ऑफलोड हिम, एंड लेट्स गिव हिम अ चांस. आई वुड से wish we had bought him instead of Lukaku. Yes, again I know, just Paila, you were also saying, I remember the streams that we did, a couple of streams in the summer, and very strong opinion that I had about Lewandowski. Listen, people out there, let's get it right. Age is just a number, and I repeat it, age is just a number. It depends on how motivated you are, how fit you are, how as in resourceful you are. Those are things that really matter in life, be it in sport, be it in any field. Age is just a number. Honestly, I can just share, I would say I'm very young out there. Everyone out there, trust me, you believe, right? I'm very young, right? I always joke around saying that, okay, I just celebrated my 18th birthday. लेकिन यार मैं बोलना चाहूंगा आज, हमारे YouTube कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो मुझे जज करते हैं. एब्सोल्युटली, मैं ये एडमिट करना चाहूंगा कि देयर आर पीपल जो मुझसे मेरा एज पूछते हैं. भाई साहब, व्हाट इज द कनेक्शन? मैं उतना ही पागल हूँ फुटबॉल के लिए जितना आप लोग हो, मे बी ज्यादा. मैं तो बोलना चाहूंगा, मैं उतना ही नॉलेजेबल जितना आप लोग हो, उतना ही मैं खेल भी सकता हूँ, बाय द वे. यस, एंड आई एम फिट इनफ like many of you. So I would like to challenge here anyone out there. So please do not judge me or anyone out there on age, especially the strikers, the best strikers in Europe, because they have done that. And coming back to the topic, of course, Bayern Munich, I think hats off. They are again one of the favorites. Absolutely. Again, comment below. क्या आपको लगता है Bayern Munich it'll be there here again? Last year हो सकता था, बोल सकते हो कि लेवेंडोव्स्की अवेलेबल नहीं थे PSG के साथ, डिफरेंस हो सकता था, I don't know. But yeah, I would take Chelsea winning, but Bayern Munich look certainly the favorite for me.
सर बारसा फैन हूँ, दैट्स व्हाई आई वुड लव टू सी बारसा प्ले चेल्सी। एब्सोल्युटली कबीर, या अगेन बाय द वे मैं न्यूट्रल हूँ इन टर्म्स ऑफ ला लीगा। ला लीगा में मैं ऐसा एक क्लब को सपोर्ट नहीं करता, बट जस्ट इन गेम प्ले जैसा एक्साइटमेंट चल रहा है बारसा में, आई एक्चुअली वुड लाइक बारसा टू विन, क्योंकि अब बारसा में एक एक्साइटमेंट है, वो एक्साइटमेंट जो जावी बारसा में आए हैं, जैसे लैम्पार्ड चेल्सी में आए थे, लैम्पार्ड एवर्टन के साथ बहुत ही बुरा कर रहे हैं, वुडंट कंपेयर देयर, बट for sure, I think I would take Barca any day, because we want to see a good game of final as well, Europa League and a Super Cup. You're Messi or CR7 fan, the core gamer, none. मैं actually एक अलग ही बोट में सेल कर रहा था जब मेसी भाई साहब उभर के आ रहे थे, and CR7 भी EPL में I think he was uploading trees. I was on a different kind of channel altogether. I was running panel and I was in that minority group who said ki check it out, mark my words, Ian Robin will be the biggest thing that football has ever seen. Trust me, and I have no qualms about saying that. मैं वो बोलता था, लिटरली मैं लड़ लेता ना सब लोग से, बेसिकली आई शो ऑन डिबेट्स टुगेदर दैट Ian Robin is the biggest thing that world has seen. Chelsea फुटबॉल के लिए भी I thought he's bigger than Zola and whatnot. And in terms of ability, I would actually argue कि Robin की skills and finishing was right up there to be that consistent performer. Problem was his injuries, and that's what took a toll on him. इसीलिए early retirement भी लिया, I know 2-3 बार लिया retirement, लेकिन it is what it is, right? Can Werner fit at Barca? Absolutely, why not? हाँ, आप बोल सकते हो बारसा एक पोजीशन स्टाइल रखती है, वर्नर इज नॉट ग्रेट इन दैट स्टाइल ऑफ फुटबॉल, लेकिन अभी की जो बारसा है, दे हिट ऑन द ब्रेक एज वेल लॉट, तो मुझे लगता है Aubameyang कैन फिट, व्हाई नॉट वर्नर? That's my take. He can probably fit, and probably La Liga may suit him a little bit more. Reece James injury news, yes, Nikhil, we are getting to that. We will be covering Norwich, Chelsea, and other EPL games. Yes, just to give you a quick update there, people. Yes, Reece James is injured. लेकिन निखिल मुझे लगता नहीं इतना बुरा है, तो touchwood, I am touching wood as I speak, and I think that Reece James will be fine, just about. Michael feels if Bayern play that formation with Gnabry and Sane as wing backs, Liverpool, City, PSG would score for fun. Yes, absolutely. Great point, Michael, because like we know, the centre backs of Bayern keeping a high line with Sule, going in the summer, it's already in the mind, and people talking about people leaving the summer. Christensen, we'll come to that. I have really strong opinions about that. We'll come to Christensen for sure, but Barca fans, how do you think about Christensen? Do let me know. Imagine Bayern versus Liverpool in quarters. Yes, absolutely. तो मैं यही पूछने वाला था अभी, क्योंकि लिवरपूल देखो क्वार्टर फाइनल्स में है, बायर्न भी क्वार्टर फाइनल्स में है. In the quarterfinals, let's actually put it out there. Let's put it out there. Chelsea should be there. Miracle हो तब लिल जीत सकती है. Man City यार, come on, वो तो super miracle होना चाहिए. They are playing tonight. By the way, 5-0. So that will be too much if Sporting even kind of draws this game. तो Man City है, Chelsea है, Liverpool है. मैं तो ये भी बोलूंगा मैन यूनाइटेड जीतनी चाहिए अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड. आई फील दैट ऑन अ चैंपियंस लीग नाइट they should beat Atletico Madrid despite वो first leg का performance. I think I'm going Man United. So इतने सारे English teams है, so maybe in quarterfinals I would like to see basically an English team playing a German side in Bayern Munich. Why not? Maybe that would also help एक early elimination of Bayern Munich. Again, no disrespect Bayern Munich fans. It is what we want, right? As a bias जो रखता हो English football के लिए, मैं बोल सकता हूँ, right? Absolutely. Number of jerseys देखकर पता कि यू आर अ क्रेजी फैन सर. कबीर यार, क्रेजी इज नॉट द वर्ड. मैं पागलपंती का हद पार करने वाला फैन हूँ, ट्रस्ट मी. और अभी से ही नहीं, मैं काफी सालों से उस पर नहीं जाते, लाइक ऐसे एज इज जस्ट अ नंबर. लेकिन आई रियली रेस्पेक्ट एवरी फैन आउट देयर. इट डजंट मैटर आप कल से फॉलो कर रहे हो कि बेसिकली आज से फॉलो कर रहे हो, यू आर अ फैन. और दैट्स व्हाई वी लव टू स्पीक अबाउट फुटबॉल, जस्ट अ डिस्कशन जो होता है, राइट? Bayern's defense is a bit shaky under Nagelsmann. That's the only doubt against them. Yeah, absolutely. I think see that वही एक है Nagelsmann versus I think पहले जो managers थे, एक rope था, one kind of confidence in their defense. Maybe they were keeping that high line of defense because they were able to keep as well. अभी वो थोड़ा shaky है because of the personal. आप बोल सकते हो Upamecano नहीं fit हुए Bayern में somehow. Probably time will come. His time will come. It's too early, I guess, right? Thank you for Christensen, Kabir. Oh, well, Kabir, आप पहले don't start counting your chickens. अभी तक आया नहीं है. याद है बहुत सारे ट्रांसफर्स हो चुके हैं ऐसे बारसा में. तो you don't want to say that, लेकिन yes, I can see, seriously say that वो आने वाले. I think Tuchel almost gave it away यार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में. हम आएंगे उस पर. So excited for Araujo and Christensen duo. तो उस पर भी आएंगे क्योंकि Araujo
का कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन इतना इजी नहीं है फ्रॉम व्हाट आई नो. अगेन आई नो दैट ही इज अ बारसा बॉय, लेकिन व्हाट अबाउट एरिक गार्सिया यार? एरिक गार्सिया छोड़ के गया था मैन सिटी टू बार्सिलोना. ही वुड वांट टू बी स्टार्टिंग एज वेल, क्योंकि फर्स्ट ईयर ठीक है, अब सेकंड ईयर नेक्स्ट ईयर ही वुड वांट टू स्टार्ट. स्पोर्ट्स टॉक विद माहिम, बिग अप भाई. सर्टनली थैंक यू ज्वाइन करने के लिए ऑलवेज एंड सपोर्टिंग. एंड अगेन 15 लोग देख रहे हैं, सब लोग लाइक कर दीजिए स्ट्रीम को, पोल लीजिए, एंड ऑफ कोर्स चेक आउट डेली फुटबॉल मैडनेस. मेरे ख्याल से उस्मान भाई ज्वाइन ही करने वाले हैं, बट अगेन मीनवाइल you can basically ask me the questions, and of course we are covering Champions League to begin with, and we will get to the Europa League. What would you prefer, Haaland at Barca, Madrid or City? Okay, interesting. none का option नहीं है, poor gamer. But I think I actually prefer Haaland. I was actually looking forward to Haaland in Madrid because I can see एक fitment है Haaland with Real Madrid. जो गेम प्ले है बेंजीमा को easily replace करेगा, but problem ये है कि करीम बेंजीमा इज राइट अप देयर. अभी भी मतलब बात की जाए तो डिबेट कर सकते कि आज के दिन में बेंजीमा इज इन बेटर फॉर्म एंड फिटनेस देन हालैंड, in terms of the Finnish striker, like Lewandowski. He's in that league. So Haaland is certainly there in the top 5, लेकिन I think Benzema, Lewandowski are just a notch above. Last एक साल की बात करें तो, especially this season, right? So मैं बोलूंगा कि Haaland, because of that reason, would probably end up at Barcelona. क्योंकि ओबामेयांग मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है. इवन लूक डी कोट भी, एज मच एज वो अच्छा कर रहे हैं. पीएसजी रियल में प्रेडिक्शंस बाय यू. यस, तो इसीलिए मैं कल नहीं किया था. जो भी कल मुझसे पूछ रहे थे, बाय द वे थैंक यू ज्वाइन करने के लिए. तो कल मैंने बोला था यार रियल मैड्रिड जीतेगी, बट मैं स्कोर लाइन नहीं गया था. आई एक्चुअली थिंक बहुत ही क्लोज गेम होने वाला है ये. तो मुझे लगता है फुल टाइम में इट विल बी 1-1. It is at the Bernabeu, or 1-0 to Real Madrid, and then it goes to extra time, और extra time में it will be 1-1. तो दोनों टीम स्कोर करेंगे. So it will be 2-1 in the second leg to Real Madrid, and then penalties. Wow, I think that would be interesting, right? Imagine वो situation आए. But हाँ, certainly it will be extra time में penalties. मजा आ जाएगा. I just want to see all the stars, for longer time in the pitch. I know काफी difficult है for players, but it is what it is. Yeah, as a spectator, of course, a neutral watch. तो सर अब एस्पिलिक्वेटा दे दो और कुछ नहीं. कबीर, कम ऑन यार, लालच बुरी बात है. लालच बुरी बात है. चेल्सी के बारे में बात करना है भाई, हम लोग तो कहीं भी नहीं है. वी डोंट हैव एन ओनर. इमेजिन वी आर बेसिकली, as I think मेरा भाई चिराग बोलता है, राइट, वी हैव काइंड ऑफ बिकम एन ऑर्फन अनफॉर्चुनेटली. यस, वी विल गेट बैक ऑन आवर फीट, लेकिन वी नीड आवर ओनर फर्स्ट, और फिर बेसिकली यार कुछ भी करो. दैट इज व्हाई आई एम नॉट हैप्पी विद क्रिस्टियनसन. यार अभी जब इतना डेलिकेट सिचुएशन चेल्सी में, यू डोंट वांट टू काइंड ऑफ डू थिंग्स एंड गो टू बार्सिलोना. अभी क्या जरूरत थी यार, इतनी क्या जल्दी है, पता नहीं कुछ तो. एंड बाय द वे द चेल्सी बॉय, बट इट इज व्हाट इट इज. एस्पिलिक्वेटा ब्लीड्स ब्लू. आई डोंट थिंक ही विल डिसाइड सो अर्ली. एरिक गार्सिया डेवलप करेगा रोटेशनल में, सेंटर बैक. ओके, यस ऑफ कोर्स ही डिजर्व्स रोटेशन. मैं अग्री करता हूँ कबीर. प्रॉब्लम इज दैट वो खुद क्या सोचता है, नो, वो मैटर नहीं करेगा. बट द थिंग इज, आई फील कि यार इट्स हिज फर्स्ट ईयर अगेन एट बार्सिलोना, सो आई फील ही विल सेटल नेक्स्ट ईयर एंड ही विल डू मच बेटर. प्रॉमिस तो सर्टेनली है उसमें. एंड ऑफ कोर्स पीके, बहुत लोग बोल रहे रिटायर हो जाएंगे, मेरे ख्याल से नहीं होंगे. एक और साल है पीके के अंदर, ही वुड प्रोबब्ली प्ले. So again, that's why I doubt that Araujo and Christensen both will start, right? Any updates about Chelsea ownership? Yes, Abhishek Saha. There are a few updates. In fact, very very interesting updates. I don't remember the names, of the bat. Lekin from what I remember, so there is actually a Chelsea fan. It's a season ticket holder who is bidding as well. I know totally there are about 20. Mark my words. 20 bidders potentially. 10 तो definitely है, लेकिन 20 bidders हो सकते हैं by the end of this week. So it'll be interesting. आज ही I think Weiss and Hansjörg जो favorites थे, Swiss and American kind of partnership में, that kind of as in collateral that they were planning to bid with, I think वो आज bid कर दिए. तो वो मैं चाहूंगा नहीं कि हो, but that is one of the favorites. Saudi, there are rumors saying that there is, basically a team from Saudi, definitely, backing this. As I said, एक season ticket holder है, which is actually a good bet, लेकिन provided the person has the money. एक होता है यार, प्रॉब्लम भी क्या हो रहा है ना, 3 billion का जो वैल्यूएशन किया है रोमन अब्रामोविच टीम ने, दैट इज द हाईएस्ट इन फुटबॉल एवर, जो भी सेल होने वाली एक क्लब के लिए. तो दैट इज ह्यूज, स्पेशली हम पैंडेमिक खत्म ही नहीं किया अभी तक. सो इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग व्हाट रियली हैपेंस, राइट, बिकॉज
let's see, as in, let's say, a super fan aa jaye, as a Chelsea owner. Let's say, that's the best case scenario. But is it the best case scenario? Because is the main thing kya hai? That person should be able to run the business of Chelsea Football Club as Roman Abramovich has run, or even better. वो ही चाहेंगे हम as Chelsea fans. So for me, again, comment करिए, what would you prefer? Would you want a super fan who's just having a valuation of about say 3 to 4 billion, and he kind of puts all his money, he or she, or would you prefer basically a team of owners, like say an Arsenal, Manchester United, or Liverpool had over the years, but maybe it's probably coming from Switzerland, a couple of them from America, and trying to put it and work as a proper business, कि वहां पर वो लोग चाहेंगे success भी. Or third, it can be the Turkish owners. We discussed Turkish owners extreme में, so maybe it could be them, right? Because the Turkey में they are very passionate about football as well, and probably having more money because there are energy resources from what I hear, right? So and plus they know Roman, especially Burak, Musin Barak, I think he was the person, right? Let's see. तो काफी लोग हैं discussion में. If Haaland goes to City, EPL will become a farmers league. Just Viola, not that it has become already. At least, when it comes to the top of the table, you can say Liverpool are right up there. Chelsea should have been right up there. But let's be honest, Pep Guardiola has made it a farmers league, and if not for his rotation in the cups, he would have won all of them every year for the last 3-4 years at least. As much as I would love Chelsea or Liverpool to actually break that norm again, but let's see. Messi owns Real. Well, sports talk in mind. All the best. मैं वही बोलूंगा. Actually, काफी interesting रहेगा क्योंकि Messi will be in that hole. So that is something that I'm really looking forward to. So let's see, how it goes. But I don't know. Let's see if Usman Bhai is coming. Yeah, I think he just messaged that he'll be coming in. Meanwhile, people again do share the stream in social media while we come to the Europa League. By the way, एक match शुरू भी हो गया यार. I think Porto versus Lyon. So we need a solid centre back now. Christensen is done. Aspi almost leaving, and Rudiger is unpredictable. We need two solid centre backs. Two, I don't know immediately. I understand from where you're coming, Mr. Kazirian. But as a Chelsea fan, I can say Thiago Silva, he's fit enough to start. Yes, not every game next season, but he is very good. Chalobah has really improved. So just like Eric Garcia for Barcelona, I feel Chalobah would expect to start, at least every alternate game at Chelsea next season. And of course, Rudiger, like you say, is unpredictable, but I think he is the main person for me. Malansar has actually done well, so we might as well keep him. And of course, there are people coming back from loan. Mbayamba, there's another youngster. We might promote him. You never know. He's a really, as in Van Dijk in the making, is what I would say. Dutch centre back, I would take him any day, right? Of course, if match goes to penalties, Donnarumma will clinch it for PSG. Well, every day is not a Sunday. Animesh, मैं ये बोलना चाहूँगा. Just Kepa, unfortunately, I have to mention that lost finally. Not his mistake. Against Liverpool, maybe Donnarumma will, obviously, fall short as well. There will come a night. So I actually have gone on record saying that I prefer Keylor Navas, just so that it's real. It gives basically an edge to it. Like, Donnarumma start kare, and he's a great goalkeeper. So I won't be surprised either. But Courtois, as much as he's a snake for Chelsea fans, absolutely, that's something that I can expect. Barca will have 4 right backs if signing go their way. Well, Always, Dest, Mazraoui, Aspilicueta, why are they doing this? So the core gamer, I feel that, as Barca fans, as Chelsea fans, as Manchester United fans, most of us know we are linked with every other player every other week, and Real Madrid as well, right? So that is what football is all about. So I don't think he aane wale. They are going for Aspilicueta, from what I understand, as number 1 target because he's Spanish. He's a leader that Barca needed the back with Dani Alves. Ho sakta hai last year, ho is saal, to maybe he might play a squad role at best. So Dani Alves, I'm not going to count really. Aspilicueta maybe replacing him directly, wo ho sakta hai, or Mazraoui might be replacing Dest. So because Dest, if you see, apart from Europa League, he's not really starting games. If at all left back, he might be developed, but I really doubt because he's not a natural left footer, right? And Barca needs a free flowing football. Chelsea perspective in the house, big up to you, Chelsea perspective. Coachella, my brother, hope you're well. Again, condolences to you and your family, brother. As in, everything is with you, and we know that what you're going through. But certainly, big ups for you to be able to join the stream. Of course, hopefully you are able to enjoy the football and get what is life about. But yes, of course, all lot of respect to everyone. Do check out Chelsea perspective. Sir, बढ़िया ओनर आएगा, टेंशन की बात नहीं. अच्छा, रोमन जैसा कोई परिंदा आके बचा लेगा चेल्सी को.
आपके मुंह में घी शक्कर, और क्या बोलो यार कबीर। चेल्सी फैंस यार, ट्रस्ट मी, वी हैव बीन रियली डिपेंडिंग ऑन रोमन, तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि विदाउट रोमन वुड हैव बीन व्हाट वी आर, डेफिनेटली नॉट। What we are is because of Roman, not totally because of him, but mainly because of him. मैं तो बोलूंगा यार, I have no qualms about saying that. And Chelsea were lucky, and Chelsea were even strategic उसको रखने के लिए इतने साल के लिए, and to keep him happy and vice versa as well. Yes, of course, big up Chelsea perspective. If war ended, then can Roman still remain as owner? Actually, yeah, interesting sports talk in mind, because I actually read I read an article that there is a possibility. There is actually a strong possibility that Roman might postpone this. But again, at the other end, there is a debate कि sanctions अगर जल्दी हो जाए तब क्या, right? Let's see. I think whatever happens, देखो दोनों साइड ही पॉसिबल है, लेकिन अगेन आई वुडंट बी डिबेटिंग ईदर वे. लेट्स सी व्हाटएवर इट इज. एट द एंड ऑफ द डे we need an owner, like Tuchel went in his press conference. He needs some focus. It helps when there is a focus, there is a surety. एक unpredictability नहीं होनी चाहिए, so that the squad, the backroom members are all settled. By the way, big up भाई चिराग को. चिराग का नाम दिया था by the way, फुटबॉल मेडिको. बिग अप टू यू भाई. सब ठीक है भाई. ऑफ कोर्स हालैंड चेल्सी, वेट फॉर माय वीडियो टुमारो. इंटरेस्टिंग. हाँ मतलब दैट इज द बेस्ट केस, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, टू बी ऑनेस्ट. अभी तो यार ओनर टू चेल्सी बोल दो कोई भी. पार्टनरशिप वाले ओनर सिर्फ पैसे के लिए आएंगे और चेल्सी को ड्रेन करेंगे, जस्ट लाइक ग्लेजर्स फॉर यूनाइटेड. कबीर, अंडरस्टैंड दैट टोटली. और मैं एक्चुअली रैंट पर गया था. आप देखे थे बाबा एंड एवरीवन, वी वर एक्चुअली सैड अबाउट इट. लेकिन अब देखा जाए तो यार सब चीज पैसा है. आज का वो युग ही अलग हो गया, वेयर यू हैड दी सिंगल ओनर जो है ना, आर सुपर फैंस, वो बहुत ही कम मिलते. मिले तो नथिंग लाइक दिस, सोने पे सुहागा, जो चेल्सी ऑलरेडी है. वील गो लीप्स एंड बाउंसेस. लेकिन if it's a business, at least they want success of the club, so it has to be accepted. लेकिन it won't be the choice of me if you ask me as well. लेकिन it is what it is. मराठी कर्नल by the way चेक करिए, इनका भी अच्छा चैनल है. Definitely every Chelsea fan is thinking about that. Yes, Barca fan आ रहा है तो certainly respect you. What if new owner is not same as Roman? नहीं होने वाला. अभी बोल के लिख के ले लो, रोमन जैसा कोई नहीं. That's what I would say. As a football fan, I can also relate because Chelsea have won lots of trophies. Yes, of course. Or by the way, we will come to the other matches as well of the Europa League. Meanwhile, hope कि आप लोग सब लाइक कर दियो स्ट्रीम को. Let me see. Hope कि लाइक टारगेट पहुंच जाओ यार. Certainly. और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? Best. Okay, the core gamer से Messi will create the best possible chance, but PSG players don't bury those chances except Mbappe. Exactly. Core gamer called it क्योंकि I think see 1-0 ही है, तो I don't think it's the end of the world for Real Madrid fans. और एम्बापे के बगैर हम देखे थे नीस के साथ क्या हुआ था. और टॉक अबाउट एम्बापे, यहाँ आ रहे हैं एक बारसा फैन इन द हाउस, दैट इज उस्मान भाई इन द हाउस. उस्मान भाई सब ठीक? वेलकम टू ऑलमाइटी ब्लूज. Thank you so much for being on the channel, for having me on the channel. थोड़ा सा मैं लेट हो गया, very sorry. अरे नहीं कोई नहीं, आए वही बहुत है यार. मतलब अगेन इट इज डिस्कसिंग फुटबॉल राइट, तो अगेन यू आर ऑलवेज वेलकम एंड ऑफ कोर्स पीपल हैव बीन वेटिंग एज वेल. लेकिन हम एक्चुअली कल की बात कर रहे थे क्विकली अबाउट द चैंपियंस लीग जो हुआ था राइट. बट अगेन उस्मान भाई इज इन द हाउस, so let's actually people move on to Europa League. By the way, Usman bhai, I think if I'm not wrong, शुरू हो गया राइट पोर्टो वाला मैच, पोर्टो लियोन. तो जी मेरे ख्याल में सबसे पहले उससे कर लेते हैं. बिल्कुल एग्जैक्टली. तो अभी तो 0-0 है, लेकिन पोर्टो बाय द वे आई रियली लाइक द मैनेजर यार. एनी वर्ड्स ऑन पोर्टो? क्या लगता है इस यूरोपा लीग में? पोर्टो का चांस अच्छा है. मतलब फाइट दिखी थी मतलब जो एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट मैच था उसमें भी फाइट दिखी थी, जो कि जिसमें वो क्वालिफाई कर सकते थे एक्चुअली होम के ऊपर. तो पोर्टो एक अच्छी टीम है और काफ़ी रेजोल्यूट टीम है. बट फॉर मी आई थिंक दैट दे आर नॉट फेवरेट्स. मतलब मैं फेवरेट्स नहीं कहूँगा उनको, बट दे आर अ वेरी रेजोल्यूट टीम. उतना ज़्यादा ना मैं पोर्टो को देख रहा हूँ ना लियोन को देख रहा हूँ, तो वुड बी वेरी लाइक मतलब कितना कमेंट करूँ मैं इसके ऊपर. एग्जैक्टली. तो आई थिंक आज भी इंटरेस्टिंग होगी. आई थिंक मूसा डेम्बेले है लियोन में, हम जानते हैं देखिए वो एक स्ट्राइकर है जो रखते हैं, मतलब पोटेंशियल है टू एक्चुअली स्कोर गोल. सो आई वोंट बी सरप्राइज कि सरप्राइज हो. ऑफ कोर्स चेल्सी बॉय एमरसन इज देयर लेफ्ट बैक एट लियोन. और एंडोम्बेले, ईपीएल फैंस को याद होगा टॉटनहम से, ही इज देयर इन लियोन. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी गेम.
लेकिन यार पोर्टो प्लेयर्स तो बहुत अच्छे हैं लियोन के पास, मतलब अब एग्जैक्टली पकेटा हम कैसे भूल सकते हैं, मतलब भूल सकते हैं कि बहुत अच्छा कोपा अमेरिका रहा था लुकस पकेटा का। फिर आपने मूसा डेबेले का नाम लिया है, काम्बी है यहाँ पे, एंडोम्बले है, तो काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, एमर्सन है जैसे आपने मेंशन किया। तो यहाँ पे डिनायर रहता है और लियोन के पास काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। मुझे मुझे ऐसा फील आता है कि लियोन इज अ बेटर टीम ऑन पेपर देन पोर्टो। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड गेम। लेट्स सी कि कौन एडवांस करता है या कौन एडवांटेज लेता है इससे फर्स्ट लेग के अंदर। एग्जैक्टली। तो क्या आपका प्रेडिक्शन क्या है फर्स्ट लेग का? पोर्टो, ये तो पोर्टो अब जीतनी चाहिए ना एट होम। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ड्रॉ होगा ये मैच, मुझे ऐसा फील होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा देख नहीं रहा दोनों टीम्स को। और लियोन ने अपने ग्रुप के अंदर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अपने ग्रुप के अंदर टॉप किया था यूरोपा लीग में। तो एक अच्छी फॉर्म उन्होंने दिखाई थी, आई थिंक अनबीटन रहे थे ग्रुप स्टेजेस के अंदर जब यूरोपा लीग के ग्रुप स्टेजेस में थे। तो आई थिंक लियोन इज अ वेरी गुड टीम, इतना आसान नहीं होगा यहाँ पे पोर्टो के लिए। यस यस एब्सोल्युटली। तो ऑफ कोर्स बारसा बिग गेम टुमारो। हम बाय द वे रियल मैड्रिड पीएसजी के बारे में डिस्कस किए थे, एंड विल कम टुवर्ड्स द एंड वापस। होपफुली टीम लाइनअप्स आ जाए बाय द टाइम वी एंड द स्ट्रीम। लेकिन टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना, लाइक आई नो इट्स गैलाटासराय बार्सिलोना, दोनों ही टीम्स जो है ना नॉर्मली एक्सपेक्ट करती है कि चैंपियंस लीग में रहे। आई नो चेल्सी हैड मेट गैलाटासराय फ्यू इयर्स अगो। आई थिंक बारसा भी जीती है गैलाटासराय के साथ फ्यू इयर्स अगो, राइट, इन चैंपियंस लीग। सो बिल्कुल बिल्कुल, दोनों होते टीम्स रहे के हैं लिए फिक्चर्स। exactly. So I think Galatasaray, you cannot take it easy because they were group winners after all. लेकिन I know a lot of changes हुए Galatasaray में। बारसा लेकिन यार अगेंस्ट एल्चे, आई नो एल्चे ही थी, लेकिन अवे गेम वीकेंड में 2-1 कमिंग बैक। स्पेशली वो दो जो मारे गोल्स, वन वाज आई थिंक डिपाई एंड अदर वाज टॉरेस, दोनों ही जो है ना मिस करे चांसेस। आई नो एक पेनल्टी था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन द फैक्ट दैट वो लोग दोनों मारे, आई थिंक विल बी अ ह्यूज कॉन्फिडेंस बूस्टर एक बारसा की फॉरवर्ड लाइन के लिए, राइट, बिकॉज एक चांसेस मिस करना व्हेन यू फाइनली डू इट फॉर अ स्ट्राइकर, वी नो व्हाट इट इज, राइट। लेकिन टॉरेस का रोल आप क्या देखते हो? Do you see him as a false nine? What is your preference in that Barca team? Because हम्म। अच्छा, टोरेस एक ऐसा प्लेयर है जो कि मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं ना ये कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा हाय भाई कैसे हैं यार महिम, कैसे हैं आप? तो मैं ये कहूंगा कि टोरेस, फेरन टोरेस एक ऐसा प्लेयर है जिस पे आपको थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखनी पड़ेगी। आई थिंक जिस पोजीशंस में वो जाता है दिस इज वेरी गुड। मतलब मुझे ना कहीं लोग थोड़ा सा उसमें मजाक में ले जाएंगे, लेकिन टीमो वर्नर की याद आती है। टीमो वर्नर आल्सो गेट्स इन वेरी गुड पोजीशंस, ठीक है। yeah, वहां पे फिनिशिंग का कभी ना कभी कोई इशू रहता है टीमो वर्नर से, विच जो फेरन टोरेस, नॉर्मली फेरन टोरेस से फिनिशिंग का प्रॉब्लम सिटी और उधर देखने को नहीं मिल रहा था स्पेन में, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऐसा इस मुझे ये लगता है कि फेरन टोरेस कैन बी अ वेरी गुड साइनिंग। और वो फॉल्स नाइन भी खेल सकता है, वो वाइड भी खेल सकता है, विच इज वेरी गुड फॉर बार्सिलोना। तो यू नीड टू हैव पेशेंस। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन, आई थिंक ही इज गोइंग टू बी गुड फॉर बार्सिलोना इन फ्यूचर। हो कुछ भी सकता है ऑब्वियसली, ही हैज द पोटेंशियल, ही हैज टू अचीव द पोटेंशियल। पोटेंशियल वो दिखाता है और अच्छी पोजीशंस में आता है, मूवमेंट अच्छी है, जिसकी वजह से मूवमेंट जब अच्छी होती है ना, इवन वो फिनिश नहीं कर रहा, टीमो वर्नर का भी यही केस है कि मूवमेंट अच्छी है, वो स्पेसेस को यूटिलाइज करता है, बिहाइंड द डिफेंस रन मराता है, स्पेसेस क्रिएट करता है, तो बाकी प्लेयर्स को फायदा होता है। तो इसी तरह बाकी प्लेयर्स को यहाँ पे स्पेसेस मिलती हैं मिडफील्ड के अंदर भी, और स्ट्राइकर को बॉबेयांग को भी अपफ्रंट स्पेसेस मिलती हैं। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कोई इतना इशू की जरूरत नहीं, इशू वाली बात नहीं है फेरन टोरेस को लेके। डिपे वेरी वही फेरन टोरेस वाला ही मामला चल रहा था डिपे का भी, कि फिनिशिंग थोड़ी सी खराब जा रही थी। अच्छी चीज ये है कि बार्सा के पास फॉरवर्ड लाइन में ऑप्शंस बहुत ज्यादा अब, ठीक है, और सब ही इवेंचुअली गोल स्कोर कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस सबका ही आएगा। तो इवन अगर वो बेंच से भी आ रहे होंगे तो दे विल हैव द कॉन्फिडेंस कमिंग इनटू दिस गेम। तो ये सबसे अच्छी चीज है बार्सा के लिए। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। और हाँ, लाइनअप शायद आ गए हैं और हम आएंगे उस पर सर्टनली। लेकिन बारसा की मतलब चर्चा कंटिन्यू करते हैं अभी के लिए। एंड अगेन यार, जो भी देख रहा है प्लीज लाइक द स्ट्रीम, चेक करिए डेली फुटबॉल मैडनेस। लाइक नेम सजेस्ट, इट्स डेली फुटबॉल मैडनेस, एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट उस्मान भाई, एंड ही कवर्स लाइक फुटबॉल एंड टू एंड। तो आप प्लीज फॉलो डेली फुटबॉल मैडनेस एंड ऑलमाइटी ब्लूज एफसी। और दोनों दोनों में एक्चुअली बेल नोटिफिकेशन दबाइए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक आई से। एंड एक और बंदा है डिपाई, मतलब आप जानते हो उस्मान भाई, बीइंग अ डच फैन, मैं तो हमेशा से चाहता था डिपाई फाइनली गेट्स टू हिज पोटेंशियल इन अ बिग क्लब। और मे बी आप बोल सकते हो कि ही हैज काइंड ऑफ रीस्टार्टेड वेल देन व्हाट ही एंडेड इंजरी के पहले। लेकिन
फ्यूचर क्या आप देखते हो? क्योंकि अभी इतने सारे, अभी ओबामेयांग हैज वर्क वेल, हालैंड की चर्चा हो रही है, तो डिपाई तो आई थिंक प्रोबेबली विल बी मूविंग ऑन। क्या लगता है रियलिस्टिकली? would be a very sad story if Depay moves on from Barcelona because मतलब आपको पता है कि वो लियोन के अंदर बहुत अच्छी फॉर्म थी and he came to Barcelona because of Ronald Koeman. He wanted to play for Barcelona. फ्री के अंदर था, वेजेस भी बहुत कम थी, तो विच आई रियली अप्रिशिएट ऑफ डिपे. इस तरह के प्लेयर्स हमें चाहिए जो बार्सिलोना के लिए खेलना चाहिए. सेम वाज द केस फॉर फेरन टोरेस आल्सो, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि बार्सिलोना के लिए खेलना चाहते हैं. तो अगर नहीं कंटिन्यू करता वुड ऑब्वियसली वेरी सैड. लेकिन आई हैव टू बी, आई मीन वी हैव टू एनालाइज कि लेफ्ट साइड के ऊपर क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास. इफ आई टॉक अबाउट इट, अगर हम स्ट्राइकर के ऊपर जाते हैं तो वो मे कैन आल्सो प्ले ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड. फिर आपके पास आंसू फाटी है, फिर आपके पास फेरन टोरेस है, शायद और भी प्लेयर्स हैं जो कि इस टाइम में मिस कर रहा हूँ जो कि लेफ्ट साइड के ऊपर खेल सकते हैं. तो ऑप्शंस बार्सा के पास काफी ज्यादा हैं. वी हैव टू, मतलब इट रियली डिपेंड्स ऑन कि सिचुएशन क्या बनती है, हम कौन से प्लेयर्स के ऊपर जा रहे हैं. प्रोजेक्ट हालैंड जो है वो सक्सेसफुल होता है या नहीं होता. अगर वो सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली फॉरवर्ड लाइन से कोई ना कोई प्लेयर जाएंगे. मार्टिन ब्रेथवेट तो जाएगा, लुक डी योंग भी जाएगा, एक और प्लेयर भी जाएगा, मेरे ख्याल में डेम्बेले भी जा रहा है. तो आई थिंक डिपे का चांस है. अगर 3 प्लेयर्स ये जाते हैं तो डिपे के रहने का चांस है. तो इतना कोई मेरे ख्याल में इशू नहीं है. लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि हम ट्रांसफर मार्केट, हमारी समर ट्रांसफर मार्केट कैसी जाती है. काफी मैं कमेंट कर रहा हूँ, क्या क्या कह रहे हैं सब. उस्मान भाई आजकल अनरिस्पॉन्सिव हो गए हो इंस्टा पे रिप्लाई यार. यार वो तो ऑलरेडी हुई हुई है एक्चुअली. बिजी बिजी बिजी। हाँ, तो यार नहीं नहीं है. मैं असल में एक बीच में एक 1 वीक आया था जिससे बिल्कुल मैं इनएक्टिव हो गया था. तो बस यही रीजन है, कोई फैमिली जो है वो कमिटमेंट्स थी जिसकी वजह से मैं इनएक्टिव हुआ था. बट आई एम ऑलवेज देयर. मतलब आप कमेंट करें या जो भी करें इंस्टा पे, आई एम ऑलवेज देयर. तो होपफुली आई विल गेट मोर टाइम टू रिस्पॉन्ड टू यू गाइस. एब्सोल्युटली। और बाय द वे, जैसे मैंने यहाँ बताया, विल गेट टू ऑल द क्वेश्चंस, सो आप क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछिए. मैं स्टार कर रहा हूँ, जो भी बेसिकली ऑफ टॉपिक होता है विल सर्टनली कम टू द एंड. और बाकी टॉपिक्स भी, लाइक आई सेड, हम ईपीएल डिस्कस करेंगे, चैंपियंस लीग वापस डिस्कस करेंगे, एंड ऑफ कोर्स एज इन लॉट्स मोर ट्रांसफर्स, चेल्सी ओनरशिप, व्हाट नॉट, राइट? टाइम रहा तो विल डिस्कस एज मच एज पॉसिबल. और टीसीएसबी आल्सो इन द हाउस, बिग शाउट आउट टीसीएसबी को. बाय द वे, मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ आज वॉच अलोंग के लिए. उस्मान भाई, आप कर रहे हैं वॉच अलोंग आज? ये मैं बस काफ़ी लेट हो गया था, जैसे मैं आपके अच्छा चैनल पे भी आने पे काफ़ी लेट हो गया. तो मैं अभी पैरेलल के अंदर जो है वो सेटअप कर रहा हूँ अच्छा लाइव अच्छा. वॉच अलोंग का. तो मैं आज बिल्कुल, मेरा हर चीज़ जो है वो ना डेली फुटबॉल लेटनेस चल रही चलो है. कोई नहीं. एनी पीपल डू जॉइन वॉच अलोंग के लिए, डेली फुटबॉल माइंडनेस में और टीसीएसबी में, दोनों ही चैनल्स कर रहे हैं सर्टेनली. बाय द वे, हम क्विकली देख ही लेते हैं यार, मतलब इतना बात हो रहा है रियल मैड्रिड पीएसजी में, एक्साइटमेंट है उसकी, क्योंकि लिटरली लाइव हो रहा है. तो मैं एक्चुअली शेयर ही कर देता हूँ. मुझे दिख रहा है शायद अभी लाइनअप्स आ गए रियल मैड्रिड के, तो वो अच्छा, इंटरेस्टिंग बड़ी रहेगा. जल्दी आ गया लाइनअप. तो लेट्स टॉक मतलब अबाउट दैट, वुड बी हाँ, वेरी 6 मिनट, इंटरेस्टिंग. 6 मिनट ही हुए, मतलब बेसिकली आपको दिख रहा है तो अच्छा. ये क्लियर है ना. तो कोटवा, कार्वाहाल, मिलिटाओ, अलाबा, नाचो, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नाचो को खेलना, क्रूज, बेंजीमा, मॉड्रिच, असेंसियो, वाल्वर्डे, विनिशियस जूनियर. तो असेंसियो के साथ गए उस्मान भाई, नॉट हम्म. रोड्रिगो. राइट चॉइस आपके लिए? क्रूज के साथ भी जा रहे हैं, तो आई थिंक या यही फिट फिट एक्सपेक्टेड होगा? लाइनअप थी अपार्ट फ्रॉम क्रूज. तो इसका या मतलब है कि या तो क्रूज हाफ फिट है, जैसे बंजेमा हाफ फिट था फर्स्ट लेग के अंदर, विच इज नेवर गुड. तो आई रियली होप कि क्रूज फुली मैच फिट हो इस मैच में, क्योंकि तभी वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है. अदरवाइज इश्यूज हो सकते हैं मिडफील्ड के अंदर. अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज एक्सपेक्टेड, यही लाइनअप एक्सपेक्टेड, थी. राइट? असेंसियो ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं खेलने के. लेकिन इट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू सी राइट साइड से कैसे खेलेगा. मतलब मतलब लास्ट गेम के अंदर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म मेरा ये था कि राइट साइड से कुछ भी नहीं था रियल मैड्रिड के पास. इट वाज ऑल, एवरीथिंग वाज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. विनीशियस को मैन मार्क किया हुआ था डेनिलो ने, और हकीमी वाज आल्सो बॉलिंग इन दैट मैच. पर पेरेडिस की बहुत अंडररेटेड गेम थी वो. तो वो राइट साइड से उन्होंने बिल्कुल जो है वो शट डाउन किया हुआ था रियल मैड्रिड को. और राइट साइड से कोई आउटलेट नहीं था. असेंसियो डज नॉट रन बिहाइंड द डिफेंस, राइट? ही कम लाइक ही इन्वर्टेड विंगर है एक तरह का. ही लाइक्स टू कट इन और वो डीप आने की भी कोशिश करता है. तो ऊपर से कारवाल राइट साइड से अप टॉप नहीं जा पा रहा था, और राइट साइड से बिल्कुल भी गेम नहीं बन रही थी. तो
it would be interesting for me to see कि अब राइट साइड से गेम बनेगी कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रोड्रिगो को खेलना चाहिए था। अगर आपने लॉन्ग बॉल्स ही देने जो आप विनीशियस को दे रहे थे लेफ्ट साइड पे, तो आपके पास एक राइट साइड पे भी आउटलेट होना चाहिए, विच इज रोड्रिगो, जिसके पास पेस है। तो लेट्स सी कि क्या होता है, बट आई वुड हैव गॉन फॉर रोड्रिगो राइट साइड के ऊपर। फॉर मी सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये होगी कि रियल मैड्रिड रेड राइट साइड और पीएसजी की लेफ्ट साइड कैसे फंक्शन करती है। एग्जैक्टली मुझे लगता है ना अलाबा और नाचो का बेसिकली एक रहेगा, मतलब फ्लोइंग, मतलब डिपेंडिंग ऑन जैसे गेम रहे ना, लेफ्ट बैक और सेंटर बैक में मेरे ख्याल से थोड़ा चेंज करते रहेंगे एज वेल। लेकिन हाँ, ग्रेट कॉल उस्मान भाई। आई थिंक ज्यादा लोग रियल मैड्रिड फैन जिससे भी बात करो वही बोल रहे हैं कि रोड्रिगो खेलना चाहिए था, बट अगेन शाउट आउट स्पोर्ट्स टॉक विद माहिम को, सर्टनली थैंक्स यार। एंड अगेन we'll come to the discussion and more as well. Rodrigo should have started, जैसे TCS भी बोल रहे हैं। बट कमिंग बैक टू बारसा, उस्मान भाई, यूरोपा लीग ऑफ कोर्स, लेकिन एक और बात एक्चुअली स्क्वाड के बारे में बात कर लेते हैं। डेम्बेले, अब रिसेंट मैचेस में डेम्बेले भाई साहब वापस से जग गए हैं। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड। आई थिंक आप ही आए थे ना, हमने डिस्कस किया था क्लियरली अबाउट डेम्बेले नॉट बीइंग द फ्यूचर, लेकिन अभी ये सिचुएशन है तो आई थिंक प्रोबेबली ज्यादा बारसा फैंस चाहेंगे कि वो एक्सटेंड कर ले, राइट? वुड यू टेक हिम? मैंने काफी दफा कहा था, मतलब काफी दफा मैं डेम्बले के ऊपर, मतलब हम बात कर चुके हैं डिफरेंट फोरम्स के ऊपर। डेम्बले के ऊपर मेरा मतलब अभी भी मैं ये कहता हूँ, द लीस्ट ही कैन डू फॉर एफसी बार्सिलोना इज साइन द कॉन्ट्रैक्ट। मैं ये नहीं कहता कि 100% बार्सिलोना की टर्म्स के ऊपर करें, अपनी भी टर्म्स होनी चाहिए, लेकिन जो वेजेस वो डिमांड कर रहे हैं और उनके जो उसका एजेंट डिमांड कर रहा है, जो वो तो बिल्कुल ही मतलब दैट्स फनी, राइट? इस तरह नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक द लीस्ट ही कैन डू फॉर बार्सिलोना इज साइन द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि 4 साल में उसने कुछ खास दिया नहीं है। और फॉर मी इट डज नॉट मैटर कि वो पिछले 2-3 गेम में क्या कर रहा है। अगर 2-3 गेम्स में ही आपने जज करना है किसी प्लेयर को, तो फिर तो आप कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, कभी भी आप इंप्रूव नहीं कर पाएंगे अपने स्क्वाड को ओवर द लॉन्ग टर्म, ठीक है? तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। डेम्बेले एक्सटेंड करता है, well and good, extend करे, he can play, he can make an impact, he can continue to play for like 4-5 years, I have no problem with that. नहीं करता, I have no problem with that also, because I am looking to move on from Dembele. और अगर अगर वो एक्सटेंड करता है देन डेफिनेटली आप हमारी टर्म्स के ऊपर एक्सटेंड करें। इफ अगर वो इंजरी का भी कोई इशू होता है उसको, बिकॉज ही हैज टू अंडरस्टैंड कि उसको इंजरी के इश्यूज रहे हैं, ठीक है, कंसिस्टेंसी के इशू रहे हैं। तो बारसा की फेवर में भी कुछ चीज जानी चाहिए, और बारसा की फेवर में यही चीज होनी चाहिए कि उसकी वेजेस कम हो। अगर वो बारसा के काम नहीं आ रहा, जो कि 4 साल से वो नहीं आया, तो बारसा शुड बी एबल टू सेल हिम इजीली। ऑफ कोर्स। और बाय द वे हम आएंगे गैलाटासराय के टीम में भी, एंड काफी देयर इज बेसिकली अ सब प्लॉट, एंड ग्रेट क्वेश्चन पवन, आई हैव सीन दैट बिफोर। लेकिन आई थिंक बारसा लास्ट लेग में आई थिंक प्लेऑफ में जीती थी 5-3 ऑन एग्रीगेट अगेंस्ट नापोली, स्पेशली वो अवे परफॉर्मेंस, हैट्स ऑफ यार, मतलब काफी अच्छा परफॉर्मेंस था अगेंस्ट नापोली। दैट इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ बारसा दैट वी हैव सीन राइट रिसेंटली। लेकिन who's that one player जो सबसे ज्यादा impress किया आपको in Europa League matches में, जो you can see that larger stage में he's there in the long run, एक where you didn't expect? काफी वैसे प्लेयर्स ने, मुझे 2 प्लेयर्स ने बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया। एक पेड्री था और दूसरा जो था वो फ्रैंकी डियोंग था। फ्रैंकी डियोंग, मैं वही उस पर आ रहा था, राइट? 3-4 महीने पहले तक ना लोग पीपल वर एक्चुअली, इवन बारसा फैंस वर एक्चुअली सेइंग कि फ्रैंकी डियोंग को सेल कर दो। I mean, I don't understand. I was like, I was gutted to hear that from Barcelona fans. बाकी fans तो ठीक है, जो भी उनका ओपिनियन है, इवन बारसा फैंस का भी जो ओपिनियन है, रिस्पेक्ट दैट, बट आई वाज गटेड टू कि वो कह रहे कि फ्रैंकी डियोंग को सेल कर दो जस्ट बिकॉज उसके कुछ 10-15 गेम्स जब ऑफ गए थे, जो कि रोनाल्ड कुमन में ऑलमोस्ट एवरी प्लेयर के ऑफ जा रहे थे। तो मैं तब से डिफेंड कर रहा हूँ और तब से मैं कह रहा हूँ कि किसी भी खास तौर पे डोंट टच फ्रैंकी डियोंग, ही इज द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द क्लब। इस तरह के प्लेयर्स को अगर आप सेल करोगे ना, तो यू विल नेवर ग्रो एज अ क्लब। सो फ्रैंकी डियोंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, और इन द राइट सिस्टम अब वो शो कर रहा है आपको, जब स्ट्रक्चर ठीक है तो शो कर रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है। एंड ऑब्वियसली पेड्री इज आल्सो वेरी इंप्रेसिव। तो आई थिंक फ्रैंकी डियोंग ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया और बहुत ज्यादा अपना दोबारा एक ओपिनियन चेंज किया लोगों को लेके कि यस, आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर for this Xavi's Barcelona. Yeah, absolutely. ये great question by पवन यादव। By the way, Galatasaray, it's not very easy as well, क्योंकि यहाँ कुछ players हैं, I think पीनिया एक है जो Barcelona लोनी is there. I think if I'm not wrong, Muslera probably will not start. It'll be Pina जो start करेंगे goal में। I don't know if you have followed him at Galatasaray, Usman bhai. He's basically your Barcelona लोनी, right, goalkeeper.
एंड आधा टूरान आधा टूरान एक बारसा आधा, प्लेयर टेक्निकली लेकिन आधा तोरन खेलेगा नहीं, मतलब उसकी खेलेगा तो नहीं ये न्यूज़ आ एग्जैक्टली। रही है कि वो खेलेगा नहीं, तो राइट उसका तो कोई मतलब क्या कहें उसके बारे में, बिकॉज आई थिंक ही इज नॉट फिट, ठीक है, थोड़ा सा ओवरवेट हुआ है जिसकी वजह से ही इज नॉट मैच फिट। आई थिंक बारसा शुड बी एबल टू विन दिस, मतलब आई वुड बी या लाइक शॉक्ड कि आफ्टर हैविंग दैट ग्रेट परफॉर्मेंस अगेंस्ट नेपोली, बारसा फाइनल में नहीं जाती। बारसा शुड बी गोइंग टू द फाइनल आफ्टर विनिंग अगेंस्ट नेपोली, और बहुत कन्विंसिंगली विन किया ओवर द यस टू यस लेग्स। एब्सोल्युटली दे वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, और बहुत मजा आया देख के बारसा को आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। बारसा को वाकई पिछले एक महीने में देख के और बहुत ज्यादा जो है ना वो मजा आ रहा है, which I was like desperate for. Yeah, Gavi will be missed. Gavi is suspended for this one, unfortunately. तो एक्चुअली देख ही लेते हैं स्टार्टिंग लाइनअप क्या लग रहा है मुझे, तो मतलब ऑनेस्टली काफी क्वेश्चंस आते हैं टर्स चेगन में। टर्स चेगन देयर इज स्प्लिट ओपिनियन उस्मान भाई। He's just a form thing, no? मतलब he will probably be the Barca number one even next season. I think कोई questions ही नहीं होने चाहिए, right? Or do you see him moving? गावी के बारे में बात कर देता हूँ, फिर मैं टर स्टेगन में बात करता हूँ। आई थिंक Sure, गावी sure. इज अ टाइप ऑफ प्लेयर जो कि बहुत मतलब अच्छे से बारसा मिस कर रही थी। द एक ऐसा प्लेयर चाहिए हु इज एब्सोल्युटली मैड ऑन द पिच, ठीक है, एंड गावी इज अ प्लेयर हु इज एब्सोल्युटली मैड ऑन द पिच। उसकी प्रेसिंग, थोड़ा सा उसको डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी इंप्रूव करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मतलब वो रेड कार्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं उसको, ये येलो कार्ड्स होते हैं, बट इस तरह का प्लेयर आपको रिक्वायर्ड होता है जो कि हर वक्त एक प्रॉब्लम रहे ऑपोजिशन के लिए। ही इज ऑलवेज ऑन योर बैक, ठीक है, whenever you are basically on the ball and you look upwards, he's on to you, ठीक है, he's that type of player, तो that is absolutely important। और इस तरह के प्लेयर्स बारसा को चाहिए थे, इस तरह का प्लेयर बारसा में था नहीं कोई। गावी इज दैट टाइप ऑफ प्लेयर। अब बात की जाए टर स्टेगन की, टर स्टेगन हैज बीन वेरी पुअर फॉर द लास्ट 2 years, नो डाउट Yeah. अबाउट दैट। क्या करियर उसका रिवाइव हो सकता है? डेफिनेटली, अगर डिगिया कम बैक कर सकता है तो टर स्टेगन भी कर सकता है, लेकिन क्या बारसा वेट करेगी? आई एम पर्सनली वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद टर स्टेगन। उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स नॉट, सेव्स के बारे में बाद में बात करूंगा कि वो क्या सेव कर सकता है या नहीं कर सकता, दैट्स एब्सोल्युटली अनदर थिंग। उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैंने आई हैव सीन हिम लाइक अनकाउंटेबल टाइम्स के बिल्कुल बीच के अंदर, हाफ पे भी नहीं जाती, वो चिप करता है मिड के अंदर और डायरेक्ट ऑपोजिशन को बॉल देता है। आप बिल्कुल आउट ऑफ पोजिशन होते हैं, और आप बिल्कुल जो है ना वहां पे कितने गोल्स हैं कि टर स्टेगन ने बॉल दी है, वो लाइव है, वो सेइंग अब बारसा को गोल पड़ेगा बिकॉज बारसा इज कंप्लीटली आउट ऑफ पोजीशन, ठीक है, जितने भी प्लेयर्स होते हैं। तो टर स्टेगन, आई एम, मुझे थोड़ा सा अब मैं कन्विंस होता जा रहा हूँ पिछले 2 सालों के अंदर, वी नीड अनदर ऑप्शन, ठीक है। जैसे ब्रावो टर स्टेगन थे ना, तो 2 ऑप्शंस थे। मैं ये नहीं कह रहा टर स्टेगन को सेल कर दो, मैं ये कह रहा हूँ कि वी नीड अनदर ऑप्शन जिसके ऊपर मैनेजर ट्रस्ट कर सके। इट इज वेरी क्लियर कि नेटो के ऊपर जो है वो मैनेजर्स ट्रस्ट नहीं करते, दैट्स व्हाई इज नॉट नेवर प्लेइंग। Yeah, absolutely. By the way, तो ये स्टार्टिंग 11 यही होगा मेरे ख्याल से गैलेटासराय के साथ। मतलब एनी चेंजेस यू सी अपार्ट फ्रॉम दिस? गावी तो ऑब्वियसली सस्पेंडेड है, बट एक मे बी एक डेस्ट एक मिनट, एक मिनट मिनवे का। एक मिनट, मेरी जरा स्क्रीन स्टक हो गई थी, सॉरी। अब मुझे नजर आ रही है, तो पीके, राहु, डेस्ट, अल्पा, बुस्केट्स, पेड्री, फ्रैंकी डी जॉन्ग, अबामेंग, आई वुड स्टार्ट दिस लाइनअप। एक्चुअली आई या वुड स्टार्ट दिस लाइनअप, लेकिन फॉरवर्ड लाइन में ऑप्शंस बहुत हैं बारसा के पास, तो हो कुछ भी सकता है, बट आई वुड पर्सनली ऑलवेज गो फॉर दिस लाइनअप। अगर आंसू फाटी आता है तो नॉर्मली इन फुल फ्लो होता है, तो आई वुड हैव फिट both sides of the pitch. I would have a pacey forward who can finish, or I would have मतलब पेस है, पिच वाइड होगी, और मिडफील्डर्स जो है वो उनकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगी। सो आई वुड ऑलवेज गो फॉर दीज थ्री फॉरवर्ड्स। डेम्बले जो है ना, हमेशा मुझे ऐसा लगता है एक फीलिंग आने लगी है कि ही इज अ सुपर सब टाइप ऑफ अ प्लेयर, ठीक है। जब वो सब्स्टिट्यूशन करके आता है तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है, जब उसको फुल 90 मिनट्स मिलते हैं तो मुझे समझ नहीं लगती, मुझे बहुत ही रेयर देखने को मिलता है कि फुल 90 मिनट्स डेम्बले जो है वो गेम को डोमिनेट करे, ठीक है। ये बहुत रेयर देखने को मिलता है, तो ये भी चीज जो है वो डेम्बले को इम्प्रूव करनी पड़ेगी इवेंचुअली। ही हैज टू बी अ स्टार्टर, कि वो 30-40 गेम्स जो है वो स्टार्ट करे, और फिर उसको परफॉर्म करना पड़ेगा उस लेवल के ऊपर। तो देखते हैं क्या होता है, बट माय फ्रंट थ्री वुड आल्सो बी दिस वन।
Yes, absolutely. By the way, again, people in chat, आप बोलिए Barca fans especially, if you want any changes, want any rotation, क्योंकि I think Osasuna है weekend में, and of course we'll come to the big, El Clasico next week. So I don't know, there might be some rotation, लेकिन ज़्यादा नहीं. I agree with Usman bhai, that's why I've selected this. Of course, Dani Alves may be back for the weekend, लेकिन ये Rajesh, by the way, thank you for joining as always. We have already done a proper stream on the new UCL model that is proposed, so please देखिए. I think we had Venice in the Monk during that stream. We discussed in detail, I think, along with him and with Football Medico. So do check it out. हमारे playlist काफी content है, तो do check it out when you're free. But I think यहाँ पर questions खाली Ter Stegen के लिए नहीं आ रहे थे. Like Nico है, बाकी लोग हैं. I think see everyone has a role, right? Usman bhai, at the end of the day, then there's no reason for them to get rid of those players. Especially Nico, I think, has a future at Barcelona. I think he'll be okay not starting as well even next year. Yes, Nico has the future. जहाँ पे जो future दिख नहीं रहा वो मुझे रिकी पूछ का नहीं दिख रहा, because बहुत ज़्यादा प्लेयर और कैसी की भी क्या नाम है न्यूज़ आ रही है कि he will be a Barca player, ठीक है, in the coming summer, और काफी ज्यादा सॉलिड न्यूज आ रही है. तो आई डोंट सी कि कोई रिकी पूछ का फ्यूचर. निको का फ्यूचर है. मुझे ऐसा लगता है कि निको शुड बी स्टिकिंग अराउंड, क्योंकि निको के ऊपर कॉन्फिडेंस भी शो करता है चावी. तो यार आई डोंट डिसएग्री. आई वांट अ वाइड प्लेयर. अगर आप डेम्बले को स्टार्ट करना चाहते हो ट्रेओरे से, टू स्टार्ट डेम्बले. लेकिन गाइस टू ऑलवेज डू रिमेंबर कि ट्रेओरे डज द जॉब, ठीक है. ट्रेओरे जो है वो फिजिकलिटी प्रोवाइड करता है. He bullies the opposition on that right hand side, और आपकी पिच को वो जो फ्लैग लगा होता है ना कॉर्नर पे, वहां तक एक्सटेंड कर देता है वो, ठीक है. तो ट्रेओरे की जॉब डिफरेंट है. डेम्बले जब स्टार्ट करता है कि वो अपनी पेस से पिच को थोड़ा वाइड तो करेगा, बट ही विल ऑलवेज लाइक टू स्कोर, ठीक है. ट्रेओरे की जो जॉब है वो डिफरेंट है, विच इन माय ओपिनियन इज रिक्वायर्ड राइट नाउ एट बार्सा, अगर आपके बाकी दो जो प्लेयर्स हैं फॉरवर्ड हैं वो गोल स्कोरिंग हो. Yeah, absolutely. But Ansu Fati will be all proper left winger, right? He plays in that position, he's your left forward basically. But So, I don't know. With everyone out, I would we were like desperate. We were desperate for goals. ठीक है, एक पॉइंट आ गया था ना. ऑलवेज वांटेड कि यार हमारे पास कोई स्ट्राइकर नहीं है, सारे इंजर्ड थे, गुएरो की जो भी सिचुएशन हुई थी, एंड we didn't have a proper striker. So I always said instead of playing Depay as a false nine, I will always play Ansu Fati as false nine, because he will definitely, उसकी जो goal scoring ability है it's second to none, और I always wanted him as a false nine. लेकिन आप उसको, अगर अब आपके पास ओबामेयंग है या फिर इस तरह की ऑप्शंस हैं जो कि खेल सकती हैं एज अ स्ट्राइकर, तो लेफ्ट साइड के ऊपर Ansu Fati is also very good. Yeah, absolutely. And by the way, they are just waiting. Injury, मतलब I know बहुत injury prone है. But I think they're waiting. Hopefully, I think Sergio Roberto probably does not have a future, but I can see certainly, Ansu Fati has a future, and I think Usman bhai has just left, but he'll come back hopefully. Disconnect ho gaya hoga for a second. Let me message him quickly. But again, people, anyone watching out there, I am starring काफी questions को, और we'll come to them as well. अभी match और Europa League की बात कर रहे. उस्मान भाई पता नहीं कैसे बंद हो गया. कोई नहीं, मैं तो यार मैंने तो हटा दिया ना, मैं मतलब चेक कर रहा था. नहीं, कोई नहीं. देखो यार, ये क्वेश्चन है सिटी हब से. आई डोंट थिंक पोस्टपोन हुए, राइट? पोस्टपोन कहाँ हुए मैचेस? मैंने कुछ मिस किया होगा या कुछ नहीं. कुछ यूरोपा लीग के मैंने देखने में आ रहा था कि कुछ यूरोपा लीग के मैचेस जो है वो पोस्टपोन नहीं, प्रीमियर लीग के बोल रहे हैं. सिटी हब इज टॉकिंग प्रीमियर लीग के. आई डाउट नहीं. प्रीमियर लीग का क्या है ना, जो टीम्स के काइंड ऑफ गेम्स इन हैंड थे, वो अभी थर्सडे को खेले जा रहे हैं, एंड वीकेंड में प्रॉपर मैचेस फिर से. तो दैट विल बी वीक 29, और कल जो मैचेस है जो हम कवर करने वाले हैं आज, that will be basically week 28, जो Chelsea, क्योंकि being in the cup competitions they miss, for example, right? So that's what it is. Rajesh Roy, absolutely yes. We cannot kid ourselves. लेकिन it's football, we know, like Barca, at the end of the day believe in scoring goals. So I like this Barca side. तो मैं देख रहा हूँ यही होगा. लेकिन Galatasaray, वही है. I think Barca first of all 8 game unbeaten run रहा है, तो kudos to Barca. लेकिन उस्मान भाई आप वही बोलोगे, once the chips are down, you want to judge this young team then, because it's very easy to be as in very good when you're going well. मतलब we have seen a lot of young sides, जो बहुत सालों तक अच्छा किए, लेकिन फिर when chips are down they kind of really go down. तो hopefully बारसा को नहीं होगा, we have been Javi in the helm. लेकिन Galatasaray का कोच का नाम मालूम है क्या है?
उसका नाम ही टॉरेंट है। तो यार सॉरी सही है। यार टर्किश फैंस एंड सॉरी गैलेटासराय फैंस, लेकिन हंसी आ गई मुझे तो। पता नहीं आपको पता है टॉरेंट क्या है? गूगल करिए, पता नहीं चल जाएगा। नाम ही कहीं टॉरेंट है। कहीं यूरोप में यूज ना कर लीजिएगा, बस मैं तो यही कहूंगा आपको, वरना एक बहुत बड़ा फाइन आएगा आपको आपके एड्रेस के ऊपर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बट मैं सरप्राइज था यार। आई नो फातिह तेरम काफी दिन तक थे गैलेटासराय के कोच, एंड आई नो दे वेंट थ्रू अ रियली बैड पैच। आई थिंक 5 to 6 नॉन स्टॉप गेम्स हारे थे, बट इवन देन गेटिंग रिड ऑफ सच एन एक्सपीरियंस कोच was kind of surprising. Finally थोड़ा बहुत फॉर्म आ चुका है, but nowhere close to what Barca fans. So for me that बेसिक first leg 12th win पे is है वो, important. Mhm. 12th पे हैं वो अपनी लीग के अंदर। मैं अभी चेक कर रहा था कि 12th पे है अपनी Right. लीग के अंदर। थोड़ा सा जैसे आप मेंशन करें, थोड़ा सा फॉर्म वापस आया, बट मतलब बारसा शुड बी विनिंग दिस ओवर द टू लेग्स, इवन अवे आल्सो बारसा शुड बी विनिंग दिस। Yeah. But वही आई थिंक कमेंट में था ना, उनका एटमॉस्फेयर एक अलग लेवल का होता है, बट अगेन हाँ, गलटासरे का एटमॉस्फेयर बहुत, बट आई थिंक बारसा हैव प्लेड अगेंस्ट गलटासरे इन द पास्ट आल्सो। चाफी वुड नो 2003-4 एवरीथिंग इन्स सीजन एंड में आउट। शायद जीती थी। हाँ, आई थिंक 4-5 मैचेस हुए हैं यूरोप में, और मेरे ख्याल में बारसा सिर्फ एक दफा ही हारी है, मतलब, लेकिन कंफर्म करना पड़ेगा। मुझे लगता है सिर्फ बारसा एक दफा हारी है, बाकी को ड्रॉ हुआ था और बाकी बारसा जीती हुई है। तो आई थिंक चावी वुड नो एवरीथिंग ऑफ दिस स्टेडियम बिकॉज ही मस्ट हैव प्लेड, ही शुड हैव प्लेड इन दिस स्टेडियम बिफोर। Yes, yes. ये interesting. Barca could receive 875 million euros after completing 3 deals. Well, good for Barca अगर ये होता है तो। A lot of money is required at the end या of the day. हाँ, बट लेकिन अब आती इस तरह के पैसे जो पिछले साल भी आते रहे, इट्स नॉट अबाउट मनी, मतलब पैसा जो है वो आता है और आता रहा है डील से, स्पॉन्सरशिप से। पिछले स्पॉन्सर से आपको शायद 50 मिलियन कम आ रहा होगा, इस बार आपको 50 मिलियन ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट हाउ यू यूटिलाइज दैट मनी, ठीक है। और जो कि अच्छा यूटिलाइज नहीं कर रहे थे आप पिछले 5 साल में, सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ यू यूटिलाइज इट। या एग्जैक्टली। तो एक्चुअली वही बाकी मैचेस में आ जाते हैं। उससे पहले क्या स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या है बारसा गैलेटासराय आपके लिए? एंड चैट चैट भी बोलिए, व्हाट इज योर स्कोर लाइन प्रेडिक्शन बारसा वर्सेस गैलेटासराय टुमारो? बारसा वर्सेस गैलेटासराय, आई थिंक बारसा शुड बी। मैं मतलब कभी ये तो मैं कहते नहीं हूँ, होम के ऊपर है, इवन होम के ऊपर भी है, तो आई एम लाइक नेवर एवर आई कैन से दैट बारसा कैन कीप अ क्लीन शीट। आई वुड ऑब्वियसली बी हैप्पी अगर बारसा क्लीन शीट कीप कर जाती है, बट आई गो फॉर अ 3-1 विन फॉर बारसा। 3-1 win. अच्छा, एंड विल कम टू अदर क्वेश्चंस। बाय द वे एल क्लासिको के लिए भी पूछ रहे थे, एंड वी विल बी डूइंग अ प्रॉपर शो यार, उसके लिए बनता है उसके लिए सर्टेनली। Javi during his conference today, there would be a lot of rotation tomorrow due to I mean fatigue. I think he means fatigue. Fatal मत बोलो यार। Fatigue and tired players. Yeah, absolutely. You know, quite possible. Big up Prasanna. Thanks for joining. And Sevilla West Ham. यार ये काफी इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है। सेविया आई थिंक प्रोबेबली यूरोपा लीग ओन करते हैं, जैसे यू नो अपना कैराबाओ कप मैन सिटी का हुआ करता था, वैसे ही सेविया का केस ऑलमोस्ट। लेकिन वेस्ट हैम यार, मतलब ये वीकेंड में काफी अनलकी थी अगर लिवरपूल, वुड यू से कि वेस्ट हैम हैव एन आउटसाइड चांस विद डेविड मोयस विनिंग? अच्छा, वेस्ट हैम जो जब सीजन स्टार्ट हुआ था, दे वर एब्सोल्युटली, मतलब बॉलिंग, दे वर स्कोरिंग फॉर फन, इवन लास्ट सीजन के एंड के ऊपर भी। एवर मतलब थोड़ा सा रिसेंटली थोड़ा सा गोल स्कोर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है उनको। लेकिन आई कैन नॉट से कि दे कैन बीट सेविया ओवर द टू लेग्स। मतलब इट्स लाइक फॉर मी इट्स 80-20, ऑल्दो वेस्ट हैम हैज बीन वेरी गुड दिस सीजन। और एक और चीज भी है कि सेविया आर कंफर्टेबल इन टॉप 4 रेस, वेस्ट हैम आर स्टिल फाइटिंग फॉर इवन फॉर नॉट फॉर टॉप 4, टॉप 6 के लिए भी वो फाइट कर रही है, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट होगा अगर वो टॉप 6 के अंदर भी रहती है। तो आई थिंक दिस पिक्चर इज मोर सूटेड टू सेविया कंसिडरिंग एवरीथिंग जो कि भी मैंने अभी मेंशन किया है। और आई थिंक वेस्ट हैम विल गिव अ गुड फाइट, बट ओवर द टू लेग्स एज यू सेड के सेविया का ये अपना ही कंपटीशन है। तो आई थिंक सेविया विल बी विनिंग दिस वन। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। बाय द वे हाफ टाइम हो गया है। एक आई थिंक बेटिस खेल रही है फ्रैंकफर्ट के साथ। फ्रैंकफर्ट भी एक्चुअली हिस्टोरिकली काफी अच्छा की है इस टूर्नामेंट में, और ये इंटरेस्टिंग है स्कोर लाइन। आई थिंक इट्स 2-1। बाप रे, वो इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है। हाँ, पीपल जो 2-1 हो चुकी देख है। रहे हैं बोले कैसा रहा है। ऑब्वियसली जर्मन फुटबॉल, यू नो, उस्मान भाई नोज स्टफ। तो फ्रैंकफर्ट यू नो इज द अंडरडॉग मे बी यार। आई डोंट नो, बेटिस तो काफी अच्छी टीम थी। डू यू थिंक फ्रैंकफर्ट इज वन ऑफ देम जो हमें बी वी हैव टू बी केयरफुल?
नहीं, फ्रैंकफर्ट ने अपने ग्रुप में भी टॉप किया था, और फ्रैंकफर्ट जो है आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अपनी लीग के अंदर भी अच्छा कर रही है। आई हैव टू चेक, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो लीग के अंदर भी दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। लेट मी क्विकली चेक इट फॉर यू गाइस। या मतलब फ्रैंक 10th है, लेकिन दे चलो आर ठीक है। 10th है, लेकिन दे आर जस्ट लाइक 3 points ऑफ द यूरोपा लीग स्पॉट, आई या थिंक या सो। तो दे या कैन स्टिल दैट्स राइट। मेक इट। बट रियल बेटिस शुड बी डिसअपॉइंटेड राइट नाउ विद द स्कोर लाइन। रियल बेटिस बहुत अच्छा सीजन जा रहा था सो फार उनका। वो एथलेटिको मैड्रिड से आ रहे हैं, व्हिच इज अ बैड रिजल्ट फॉर देम। एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट भी मैं मैच देख रहा था, तो अच्छा खेल रहे थे वो। इट वाज नॉट इजी फॉर एथलेटिको मैड्रिड, 2-1 के ऊपर बहुत अच्छा मैच चल रहा था, एंड इवेंचुअली एथलेटिको मैड्रिड स्कोर्ड। और फिर वो बिल्कुल ही ऐसा एंड पे ऐसा लग रहा है कि वो सिंगल हैंडेड मैच या कन्विंसिंगली एथलेटिको मैड्रिड जीत गई होगी। रियल बेटिस का अंडर पेलेग्रिनी बहुत अच्छा सीजन चल रहा है, और दे शुड बी डिसअपॉइंटेड विद द स्कोर लाइन। दे वर फेवरेट्स इन दिस टाइम। राइट, ये वाला तो लग ही रहा है ना, अडामा प्रोबेबली विल स्टे ना एट बारसा। इट रियली डिपेंड्स। मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि ट्रिंकाओ ट्रिंकाओ की सिचुएशन, अगर ट्रिंकाओ को लेती है वुल्स, देन इट वुड बी अ पॉसिबिलिटी कि अडामा स्टे करे। अगर ट्रिंकाओ को नहीं लेती वुल्स, तो देन इट वुड बी अ कॉम्प्लिकेटेड डील। इट रियली डिपेंड्स कि डेम्बले का क्या होता है। अगर डेम्बले आई मीन इवेंचुअली ही डिसाइड्स टू स्टे, तो फिर अडामा का रहना बड़ा मुश्किल है। सो अडामा सिचुएशन डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो अभी कहना तो बड़ा मुश्किल है। आई वुड अभी कीप भी पर्सनली कीप अडामा। एग्जैक्टली, यानी अभी भी बेटिस के है सपोर्टर्स। एब्सोल्युटली, लाइक दैट्स अ गुड मैच, इतना बोल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम अटलांटा लेवरक्यूसेन, वो एक इंटरेस्टिंग मैच होना चाहिए ना। रेंजर्स भी काफी इंप्रेस की है, दे आर प्लेइंग आई थिंक रेड स्टार बेलग्रेड। तो रेंजर्स प्रोबब्ली इज एन आउटसाइडर, लेकिन अटलांटा लेवरक्यूसेन, लेवरक्यूसेन पता नहीं आपको पता है कि उस्मान भाई, आई थिंक उनका राइट बैक है जेरेमी, जेरेमी फ्रिम्पोंग। He's been linked with Chelsea आज ही। I don't know if you know anyone or anyone in the chat can help me. How's he? क्योंकि maybe it's Europa League का performance award, but Atlanta should again beat Leverkusen, नहीं over 2 legs. इट विल नॉट बी इजी। उसकी वजह ये है कि अभी रिसेंटली ड्रॉ किया था यहाँ पे होम पे, बायर्न के होम पे लेवरकूसन ने। तो इट विल नॉट बी इजी, और मेरे ख्याल में लेवरकूसन या सेकंड या थर्ड पोजीशन पे है अपनी लीग के अंदर। अटलांटा ऑन एंड ऑफ चल रही है। अटलांटा प्लेज एक्सपेंसिव फुटबॉल। दे नो दे विल एब्सोल्युटली डिसमेंटल बायर्न लेवरकूसन। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड गेम, और बहुत मुझे ऐसा लगता है कि इट्स गोइंग टू बी अ 50-50 मैच। बट आई वुड गो फॉर अटलांटा ओवर द टू लेग्स, स्लाइटली अटलांटा ओवर द टू लेग्स। Interesting, interesting. और by the way, Leipzig को तो I think walkover मिल गया है, because of obvious reasons. Russian clubs, नहीं involved है, तो I think they've got a walkover, so they are already in the quarterfinals. For me, if you have to ask me, Usman भाई, Leipzig is one of my favorites. मुझे अच्छा लगता है बस Leipzig का फुटबॉल देख के, मतलब that's one of the thing I would like to see Leipzig in the final along with Barca, if you have to really call out. मतलब आई एग्री, मतलब आई थिंक कि हमेशा अच्छा कि I think उस्मान भाई का शायद इंटरनेट अटक गया है। ये पीपल, इफ यू आर एबल टू हियर उस्मान भाई, प्लीज कमेंट करिए। आई थिंक उनका इंटरनेट है, और इफ यू आर एबल टू हियर मी, प्लीज हेल्प मी यस आई अंडरस्टैंड। कैन हियर यू। कैन यू या हियर या मी फाइन नाउ? फाइन। हाँ, आई थिंक थोड़ा अटक गया था, बोलिए। अच्छा, जर्मन क्लब्स हमेशा अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। दे ट्राई टू प्ले एक्सपेंसिव फुटबॉल, और इन द एंड आपको याद होगा वो लाइप्जिग ने सिटी को भी हराया था अपना लास्ट ग्रुप स्टेज, जिसकी वजह से दे क्वालिफाइड फॉर द यूरोपा लीग, एंड दे वर वेरी इंप्रेसिव इन दैट गेम। हायर अप द पिच, जो ही जर्मन स्टाइल है, प्रेस करना, ट्राई टू बी ऑन द बॉल, ट्राई टू बी वेरी डायरेक्ट। दिस इज एक्चुअली व्हाट लाइप्जिग डू आल्सो। डॉर्टमुंड भी इसी तरह ही करती है। तो लाइप्जिग आई थिंक इज गोइंग टू बी अ वेरी डेंजरस टीम। एक मैं ये कह सकता हूँ कि अंडरडॉग्स हो सकती हैं इस कंपटीशन के अंदर आरबी लाइप्जिग, लेकिन ऑब्वियसली फेवरेट्स ऑल क्लब हैं। ऑब्वियसली बार्सा है, सेविया है, और भी 2-3 और क्लब्स हैं, दे आर एब्सोल्युटली फेवरेट्स, बट लाइप्जिग कैन बी द अंडरडॉग इन दिस टूर्नामेंट। एब्सोल्युटली। तो यार, ओवर टू द ईपीएल, बहुत बात होगी यूरोपा लीग, एंड विल कम बैक टू दैट ऑब्वियसली, टाइम रहा तो लास्ट में टू द क्वेश्चंस एज वेल। लेकिन ऑफ कोर्स चेल्सी फैंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। उस्मान भाई, आप जानते हो ओनरशिप की बातें चल रही है। आई डोंट नो, करीबन 20 बिड्स आने वाले हैं इस हफ्ते। पता नहीं कितने एक्चुअल बिड्स होने हैं, कितने फेक बिड्स है। लेकिन अभी के लिए यार, बेस्ट थिंग इज वी आर प्लेइंग नॉरिच। नो डिसरिस्पेक्ट टू नॉरिच, लेकिन आई थिंक उस्मान भाई आप अग्री करोगे, नॉरिच अगर सेव करती है अपना सीजन, दैट विल बी द बिगेस्ट कमबैक एवर। नहीं, दे प्रोबब्ली डू।
बस मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सेव कर पाएगी। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम फॉर चेल्सी। मतलब नॉर्विच ने एक दो गेम्स बीच में जीते थे, लेकिन वो भी कोई ऐसी टीम, मतलब कोई बड़ी टीम के अगेंस्ट नहीं जीते थे कि मैं कहूँ कि हाँ यार उसने ये गेम जीता था तो नॉर्विच माइट कैन अपसेट चेल्सी आल्सो। नो चांस, मुझे नहीं लगता। आई वुड बी शॉक्ड एट द परफॉर्मेंस ऑफ चेल्सी कि अगर यहाँ पे यहाँ पे अगर चेल्सी ये गेम नहीं जीतती है। चेल्सी शुड बी विनिंग दिस गेम वेरी इजीली। एग्जैक्टली। मैं तो इतना तो बोलूंगा कि चेल्सी को थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए ना। 4-0 विक्ट्री है तो क्यों तो चेंज करोगे। लेकिन आई थिंक आई थिंक पीपल सेड इन द चैट ना, ये एक बिजी गेम वीक है। वी आर हैविंग आई थिंक न्यूकासल वीकेंड में। चेल्सी की आप प्लेइंग न्यूकासल। न्यूकासल जो एक फॉर्म टीम है, तो आई थिंक विल प्रॉब्ली टेक दैट गेम मोर सीरियसली। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनफॉर्चुनेटली ब्रेकिंग न्यूज, रीस जेम्स इंजर्ड फिर से। आई डोंट नो क्या है चेल्सी एंड इंजरीज इस सीजन में। रीस जेम्स इंजर्ड इस बार, अच्छा, लेकिन रीम जेम्स काफी इंजरी, मतलब काफी इंजरीज हो रही हैं रीम जेम्स को पता नहीं। ओवर द He has never सीजन। been, huh? He has never been. जब वीगन में थे, he was not known for injury. Yes, he was injured for one long time. लेकिन ऐसा नहीं है, he kind of recovers very quickly as well. इस बार पता नहीं क्या हो रहा है। In fact, ये दूसरा लेग है, तो I don't know whether it's a good thing or a bad thing. The leg that he injured previously, ये दूसरा लेग है। रिपोर्ट्स अभी आने वाले हैं स्कैन के। लेकिन इस वीकेंड तो मतलब इस थर्सडे तो सर्टनली हिल मिस। वीकेंड का देखते हैं। अगर न्यूकासल के साथ वी नीड हिम, ही स्कोर्ड अ ब्रेस राइट, एंड ही इज द फॉर्म टीम। लेकिन एक्सपेरिमेंट में इसलिए बोला हूं क्योंकि वी हैव हार्डली प्लेड 4-3-3, वी हैव हार्डली चेंज द फॉर्मेशन। रीस जेम्स नहीं है, तो आई थिंक नॉरिच है, तो आई थिंक एक्सपेरिमेंट करना बनता है, क्योंकि थर्ड पोजीशन इज समथिंग दैट चेल्सी विल टेक राइट। अगेन चेल्सी फैंस द हाउस। आप बोलिए क्या लगता है। मतलब मैं तो ये लाइनअप के साथ जा रहा हूँ अगेन नॉरिच। हमने 7-0 जीता था फर्स्ट लेग में, विद मेसन माउंट, जॉर्जिनियो बीइंग द फॉर्म प्लेयर्स अपार्ट फ्रॉम द विंग बैक्स। तो विंग बैक्स तो खैर अवेलेबल नहीं है इसमें। Alonso, from what I hear, is just back from COVID, so I don't see him starting. Maybe bench पर रहेंगे. Sar has done decently for a full back. Aspilicueta should be back. Saul, you can argue कि वो होना चाहिए, लेकिन I think Ziyech ने hardly खेला है लास्ट एक हफ्ते में, तो I think he'll probably come back. क्रिस्टियनसन, अब ये सबसे बड़ा एस्पेक्ट है। भाई तो उस्मान भाई, मैंने बात नहीं की आपसे स्ट्रीम के पहले, मैं काफी बोल रहा था। आई वाज जस्ट वेंटिंग आउट माय फ्रस्ट्रेशन, तो क्रिस्टियनसन भाई साहब, मतलब आई रेस्पेक्ट द फैक्ट कि यू हैव सर्टेन एम्बिशंस। बार्सिलोना आ रही है, लेट्स बी ऑनेस्ट, लाइक बार्सिलोना रियल मैड्रिड आती है तो प्लेयर कैन नॉट से नो। जावी हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड सेइंग वो नहीं होने वाला है। बट मार्च है यार, अब मार्च का बिगिनिंग है। व्हाट इज द नीड फॉर यू टू बेसिकली इवन ट्राई टू गेट इनटू द स्टॉक्स, स्पेशली जब आपकी क्लब अभी टर्मोइल में है। वी डोंट हैव एन ओनर फॉर गॉड सेक। मतलब क्या बोलोगे यार। जस्ट एज अ न्यूट्रल, यू थिंक क्रिस्टियानो इज डूइंग द राइट थिंग? फॉर मी आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, बीइंग अ बारसा फैन, आई हैव टू से कि आई डोंट लाइक players going for medicals when they are on contract or when the transfer window is not open. तो I have to be very clear. अगर यहाँ पे मेरा एक सेंटर बैक होता या फिर डेम्बले की सिचुएशन है और वो जहाँ के मेडिकल्स दे रहा होता, तो आई वुड बी कट इट राइट नाउ। ठीक है, तो आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट हियर कि it's not good. Obviously, it's good for Barca that we are getting a center back because we desperately need a center back. Uh, is he going to be a big player? Only time will tell. He's not a big player right now. I have to be very clear. He has the potential to be a good player, but he's not a big match player as of yet. ठीक है, तो कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, जैसे चैंपियंस लीग का फाइनल था और भी काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, बट ही हैज टू बी वेरी कंसिस्टेंट. बट आई हैव टू एग्री कि this is something that he should not be doing, especially mid-season, especially when he is in the starting lineup normally for Chelsea. एग्जैक्टली। और मैं इसीलिए एक्चुअली काफी चेल्सी फैन मुझसे डिसएग्री करेंगे। एनी चेल्सी फैंस आउट देयर, अगेन डू कमेंट व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस लाइनअप अगेंस्ट नॉरिच। अगेन ये खाली नॉरिच के लिए है, बिकॉज आई थिंक वी कैन एक्सपेरिमेंट लिटिल बिट मोर उनके साथ। और फाइनली वी हैव टू गो इवेंचुअली 4-3-3, अदरवाइज वी विल नॉट गेट टू द लिवरपूल और मैन सिटी स्टैंडर्ड्स इन द लॉन्ग रन। दैट्स जस्ट माय ओपिनियन। लेकिन क्रिस्टियंसन, द रीजन आई एम प्लेइंग हिम बिकॉज मैं देखना चाहूंगा उसका क्या माइंडसेट है। यू प्ले हिम अगेंस्ट नॉर्विच एंड देन दैट्स इट, बंद कर दो। इसका चैप्टर क्लोज कर लो वहीं। एंड वी नीड रेस्ट फॉर थियागो सिल्वा, रूडिगर फॉर द वीकेंड, तो दैट इज माय कॉल। But again, you might have a different opinion. Big up to Devils United, great Manchester United fan, of course, great channel. Yes, please, everyone, please smash that like button. Certainly helps. And to check out Devils United, NS Sports TV, great Chelsea fan in the house, City Hub.
City fan, of course. We have Maratha Color. Lot of people जो join कर लिए हैं, उनके भी chance है यार. Apart from Daily Football Madness और Almighty Blues FC, so check करिएगा. लेकिन again, for Chelsea, I don't know, like obviously being a Barca fan, Usman भाई आप बोलोगे, in terms of ownership, it's always better to have a single owner. एक direction आता है, एक focus आता है, plus एक होता है कि यार आप you have to do well, मतलब you have to basically put all eggs in one basket, because वो एक आती है pressure with that. एक consortium आती है तो it's kind of spoiled everywhere, right? And then what would you say? What is the best case scenario for Chelsea going forward? It's very difficult to say because Roman Abramovich was an owner who had money, but उसका जो model था was always related to football. He always wanted to win, and उसी की वजह से आपको इतनी ज़्यादा sacking देखने को मिली थी, because he always wanted to win and he wanted to make Chelsea this one of the biggest club in the world, which I think he did. It's just my opinion, मतलब हर एक की अपनी मर्जी है, which I think he did. ये footsteps को follow करना I think would be very difficult, because guys always remember, look around, कितने बड़े बड़े क्लब है. यूनाइटेड को आप देख लें, आप लिवरपूल को देख लें, आप स्पर्स को देख लें, आप आर्सेनल को देख लें, इनकी हिस्ट्री है. they are one of the richest, they have one of most of them have the richest owners, but वो इतनी ज़्यादा spending नहीं करते, वो business model के ऊपर चल रहे हैं. they are like क्या आ रहा है, ठीक है, जो आ रहा है वो इनफ है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वी आर इन प्रॉफिट, दैट्स इट. सो ऐसे ओनर को रिप्लेस करना, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर चेल्सी. सो आई एम एक्चुअली वरिड राइट नाउ, and I think every Chelsea fan should be worried. Obviously there is hope always at the end of the tunnel, and I really hope कि ऐसा ओनर मिले जो कि अब्रामोविच की जो लेगेसी है उसको आगे लेके जा सके, रादर देन कि वो अपने आइडियाज के थ्रू भी लेके जा सकता है वो. बट I'm worried actually for Chelsea कि क्या होगा under the new ownership. Wow, interesting. By the way, our lineups आ गई है. Thank you, anonymous Meaver. Thank you for joining as well, and I hope everyone has liked this stream. So Real Madrid तो हम देख ही थे उस्मान भाई. It is basically PSG. So PSG are playing with what? Mbappe, Messi, Neymar. Paredes is playing, Verratti, Danilo. So Paredes being fit is a big deal for PSG. First leg में काफी अच्छा था. So technically they are going with the same team except for Di Maria is on the bench, and as expected Neymar is playing. अब team sheet में दिखा रहा है Neymar right side, लेकिन वो interesting रहेगा क्योंकि Nuno Mendes and Kylian Mbappe had a very nice kind of जुगलबंदी going on first leg में. तो लेकिन नेमार लेफ्ट पे रहेगा और वो he will try to come inside और Mbappe will be running behind the defense और Nuno Mendes वही जॉब चल रही होगी. नेमार will come inside, ठीक है. Mbappe will be going mostly on that little bit left hand side behind the defense, and Nuno Mendes would also be going into the space जो कि नेमार लीव करेगा. तो I think वो एक combination वहाँ पे बन जाएगा इनका. Yes, interesting. That is probably going to happen. Good call that, Usman bhai. लेकिन ये interesting, coming back to Chelsea, Akanji, do you think really Akanji Chelsea standards like Akanji no disrespect? Akanji has not been consistent so far. Yeah. So I would, मतलब, why would you spend like even 30-40 millions on Akanji when you but again मेरे एकदम से दिमाग से निकल गया था Roman Abramovich might not be involved. Exactly. So क्या 80-90 million लगाएगी, अब 100 million लगाएगी ठेले के ऊपर जो उसमें डे पे है. So I have no idea. By the way, जिनको पता नहीं है, चेल्सी का नया स्टेडियम का भी बात चल रहा है, राइट? वो चल रहा था रोमन अब्रामोविच के समय पे. तो इट्स नॉट जस्ट 3 बिलियन. जो बिड होनी चाहिए एक्चुअली, जो विनिंग बिड होनी चाहिए, वो नीचे 3 बिलियन व्हिच इज द हाईएस्ट एवर, प्लस 1 बिलियन फॉर द स्टेडियम. पता नहीं यार कौन लगाएगा, प्लस और ट्रांसफर्स का अलग किटी, लाइक उस्मान भाई हिटिंग द नेल ऑन द हेड. तो Chelsea should just keep their players अभी के लिए. That's what I would say, as much as possible. Messi Neymar link up होगा and Mbappe to supply. Yeah, of course. लेकिन again to Norwich Chelsea तो यार no point prediction. I think we'll all go for a high scoring Chelsea win despite it being away. मैं तो जा रहा हूँ Chelsea 2-3 गोल से जीतनी चाहिए इसमें. Lukaku back scoring form में, hopefully. Definitely. Right, and Southampton Newcastle है. तो Southampton काफी इंटरेस्टिंग रहा है क्योंकि they've been up and down. They have Bruja of course. Newcastle is coming up. क्या लगता है उस गेम में? I think Newcastle.
ड्रॉ भी हो सकता है, बट आई एम गोइंग फॉर न्यूकासल। न्यूकासल ने आई थिंक दे डिड एवरीथिंग राइट इन द विंटर ट्रांसफर विंडो, और यही बात चलती थी जब हम बात करते थे कि क्या न्यूकासल रेलेगेशन से बच सकेगी, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द विंटर ट्रांसफर विंडो। विंटर ट्रांसफर विंडो दे डिड गुड, दे चेंज अ मैनेजर एंड दे हैव अ वेरी गुड मैनेजर। I think I'm going to go for a draw, and I think draw would be a very good result for Newcastle also in this game, and also for Southampton as well. Yeah, absolutely. Wolves or Watford? Again, Watford के लिए I think literally it's desperate measures. कोई चांस है Watford का? क्या लग रहा है? टेबल देख लेते quickly. नहीं, मुझे नहीं लग रहा। They are like, I think they will be relegated. मुझे ऐसी feeling आ रही है कि Watford will be relegated. They can't just वही keep a clean sheet. That's the problem with them. They can't keep a clean sheet. Or I think they will be losing this match. Wolves will be winning this one. Yeah, क्योंकि Wolves की भी I think form has been literally on and off, right? As in बहुत अच्छा लग रहे थे, then suddenly 3 losses on the bounce. So I think it's time कि Wolves जीते and challenge I think the likes of West Ham and Spurs. लेकिन अभी क्या लग रहा है टॉप 4 में? I know every week almost we change fourth team. लेकिन Arsenal अभी भी last time I think we went to Arsenal right together. Yeah, considering everything, I think it should be Arsenal. I can't say Tottenham. Tottenham also have a good chance. I think Tottenham के fixtures Arsenal से भी बेहतर हैं, but you don't know what to expect from Tottenham. Manchester United are in trouble right now. मुझे ऐसा लगता है they are in big trouble, और यहाँ पे problem रहेगी United के लिए. I think Arsenal would be kicking themselves. They have the perfect opportunity to revive Arsenal as a football club. यहाँ पे top 4 finish करें, and Arsenal back in the Champions League would be very good news for obviously Arsenal as a club and the fans, and I want that because I think Arteta has done a very decent job, and they are winning the games that are expected. Other teams are not doing that consistently, so I think it's Arsenal के हाथ में है, and they will let it slip अगर वो करेंगे, तो Arsenal I think should be finishing in top 4. और यार ये कम ऑन सेंट मैक्सिमन एटलीस्ट नॉट विनिंग दैट एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू ठीक है इयर्स यार, लेकिन आपने वो कॉन्फिडेंस देना होता अपने प्लेयर को तो आप कुछ भी कर सकते हैं। Yes, अभी मार्शल का absolutely. भी तो बैलन डोर क्लोज था ना, तो इट्स ओके। या और रेलेगेशन आपके लिए वॉटफोर्ड नॉरिच थर्ड टीम कौन से होने वाली है फॉर यू? Oh man, I was not like even thinking about Leeds under Bielsa getting relegated, but they definitely can now. Look at that. यार मैं तो चाह रहा Everton हूँ is also. लैम्पार्ड I नहीं हो think जाए यार। Everton will eventually be saved. या दे विल। मुझे ऐसा पता नहीं, मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि बर्नली बर्नली शायद बचे। बच ठीक जाए है, ओके। बर्नली शायद बचे और लीड्स रेलीगेट हो जाए इसमें। इंटरेस्टिंग। हाँ मतलब एवरी वीक कुछ ना कुछ होता है ड्रामा, तो दैट इज समथिंग हम सर्टेनली लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। पर हाँ लॉट ऑफ गेम्स देयर ईपीएल में, तो यार लेट्स सी इफ वी डू अ वॉच अलोंग कल नॉरिच चेल्सी का। आई थिंक वन ऑफ अस विल सर्टेनली डू इट, सो डू चेक आउट आवर पोस्टिंग्स। जैसे मैंने बोला आज रात को भी उस्मान भाई इज डूइंग वॉच अलोंग, टीसीएसबी इज डूइंग वॉच अलोंग, आई एम जॉइनिंग टीसीएसबी। सो जो भी लोग नहीं सब्सक्राइब किए प्लीज सब्सक्राइब, not just to Daily Football Madness, Almighty Blues FC, but to TCSB, to Maratha Color, and lot many others जो chat में बने रहे। Of course, एस्टन विला कुटिन्यो की बात तो करनी पड़ेगी क्विकली। उस्मान भाई कुटिन्यो ब्रिलियंट जो है, कॉन्फिडेंस वापस पता नहीं कहीं से पैदा हुआ है। यू थिंक ईपीएल इज व्हाट इज फॉर हिम? दैट इज व्हाट इट मींस। Yes, I think so. I think so. If he's doing well, I'm happy. I wanted him at Barcelona. It didn't work out. That's the bottom line. And if he's doing good at Aston Villa, I'm happy for him, and I think he should be staying at Aston Villa. I think the story has ended. मुझे ऐसा लगता है the story has ended, and he should move on. And I wish him all the best. Yeah, 100%. मतलब वही बोलोगे क्या? मतलब lot of players है, like certain kind of geographies, certain kind of environments जो suit करते हैं, and of course जेरार्ड की भी प्रशंसा करनी पड़ेगी वहाँ पर, maybe he's the one। इसलिए लैम्पार्ड यार I was hoping यार बच जाए सीजन बस, क्योंकि we don't want the case कि यार आप 2 बार अभी negative comments लेंगे and then people will be like he's not made for management at all। like बंदा सीख रहा है, not a right timing। I think हमने It's okay. discuss किया था in the past। I think it would be a very good achievement अगर Lampard Everton को save कर लेता है, I think, and then he can start fresh next season. So it's okay यार, मतलब I think he did a very good job with Chelsea। मतलब काफी underrated season था, and I think he is a manager. He will learn, and I think he will be a good manager in future. Yeah, let's hope for that। Bayern यार मतलब ऐसे प्लेयर्स हो लेवेंडोव्स्की, gnabry और साने दे दो मुझे
we can probably do something out of it, right? But yeah, I think वो Bayern एक build की है, they have built it over the years, मतलब that is DNA of Bayern Munich. तो they never स्पोर्टिंग give प्रोजेक्ट up. बहुत अच्छा है, उनका स्पोर्टिंग Exactly. प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। दे ऑलवेज गेटिंग द प्लेयर जो उनको रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। दे आर वेरी स्मार्ट इन द ट्रांसफर, दैट्स व्हाई दे आर ऑलवेज गुड। मतलब आप रियरली आपने देखा है शायद कोई सीजन आओ पिछले 10-15 साल में जिसमें वो स्ट्रगल किए हो। दे आर ऑलवेज देयर, दे आर ऑलवेज कम्पीटिंग, चाहे जीते ना जीते, बट दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर द चैंपियंस लीग एवरी सीजन। Yeah. Bellingham to Liverpool, मतलब next season नहीं ना? Unfortunately, Ankit bhai, my stream starts in like 2 minutes. I really have to rush now. ओके, नो नो, So, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। चलो चलो, कोई नहीं, एनीवे मैं भी एंड ही कर रहा हूँ। तो थैंक यू उस्मान भाई, थैंक्स अ लॉट thank you आने so के लिए। much यार, पीपल बहुत डू मजा चेक आया आउट भाई। डेली फुटबॉल मैडनेस और ज्वाइन करिए डेली फुटबॉल मैडनेस पे वॉचर के लिए, एंड लेटर ऑन टीसीएसबी भी विल कंटिन्यू। बट उस्मान भाई, सी यू सून, नो प्रॉब्लम। Thank you so much यार, take चलो care everyone, thank you so much। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, चलो यार मैं ही आंसर कर देता हूँ ये। तो बेसिकली बेलिंगम टू लिवरपूल मेरे ख्याल से नहीं होने वाला है। मैं रीजन ये बताऊंगा क्योंकि यार डॉर्टमंड आर अ बिग क्लब इन जर्मनी। जर्मनी में दे आर अमंग द टॉप 3 क्लब्स आप बोलोगे, एंड देयर हाँ उनकी स्ट्रैटेजी यही रही है कि वो डेवलप प्लेयर्स और फिर सेल करते हैं रीसेल वैल्यू के साथ। बेसिकली वापस से बेसिकली दे इन्वेस्ट इन यूथ। अभी के लिए Haaland is something that they will sell, they'll make money, and then maybe use that money in getting a proper striker again, maybe a midfielder लाएंगे जो बेलिंगम के साथ खेले। फिर फाइनली बेलिंगम को they will let go, क्योंकि बेलिंगम they had invested a lot as well। आप याद रखो यार, बर्मिंगम सिटी बेलिंगम का नंबर रिटायर कर ली थी। इमेजिन, मतलब वो सैक्रिफाइस के बाद बेलिंगम इतने जल्दी निकलने वाले डॉटमंड से, आई डोंट थिंक सो। लेकिन एब्सोल्युटली वंडरफुल प्लेयर, he would fit Liverpool, he would fit Chelsea, कोई भी टीम बोलो, क्योंकि he is your proper box to box जो अटैकिंग मिडफील्ड भी खेल सकते हैं, डिफेंसिव मिडफील्ड भी खेल सकते हैं इन अ डबल पिवट फॉर मी। तो मैं तो डेफिनेटली देखना चाहूंगा इन द प्रीमियर लीग। यस अनोनिमस मीमर, ऑलवेज गुड टू हैव यू, गुड बाय टू यू एज वेल। लेकिन बिफोर एंडिंग द स्ट्रीम पीपल लाइक कर दीजिए, डू लाइक द स्ट्रीम, डू चेक आउट दैट पोल। हाँ मैं पोल एंड करने वाला हूँ। And the last thing, let's quickly actually come to your predictions. अब हमने लाइनअप देख लिया रियल मैड्रिड पीएसजी की। So with that lineup, Real Madrid versus PSG, the second leg, it's the D-Day for these two big clubs. I know Real Madrid big club है, PSG getting there, no pun intended. लेकिन क्या लगता है क्या होगा इस सेकंड लेग में? लाइक मैंने तो अपने प्रेडिक्शन दे दिया है। According to me, it will certainly be a 1-0 Real Madrid win in 90 minutes. Goes to extra time में 1-1, and then goes to penalties. This match deserves it. It's of the highest order, highest quality. मैं सिर्फ होप कर रहा हूँ कि ये सब as in the players play, no one gets injured. Cruz खेल रहा है, Mbappe खेल रहा है, that is really wonderful to see. And I'm hoping we just get a good game, and of course for Messi fans out there, I'm sure आप वेट कर रहे हो। By the way, मैं देख रहा हूँ 75 likes हो गए। Come on people, जो भी देख रहा है, at least I hope everyone has liked the stream. Everyone has subscribed to Almighty Blues FC, to Daily Football Madness, and to TCSB जो हम join करने वाले हैं in watch along as well, and Chelsea Perspective. I think there were a few others in the chat. Marathi Color, do check it out as well. So yes, Devils United, shout out Dugout Football Channel, and of course Sports Talk with Mahim. Thank you यार super chat के लिए। By the way, yes, we are monetized, तो आप super chat भी दे सकते हो अगर आपका मन करे तो। But we are always here for you all to discuss not just football discussion, लेकिन हाँ we are back with interesting fun trivia shows as well. मैंने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट वन, बी रेडी। नेक्स्ट ट्रिविया शो होने वाला है, मोस्टली होने वाला है लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। काफी तगड़ी होगी वो। एक प्रॉपर लिवरपूल फैन जो आप सब जानते हो, और एक प्रॉपर मैनचेस्टर यूनाइटेड जो आप जानते हो एज वेल, होपफुली राइट, वी विल गेट इन द हाउस। Or maybe Chelsea Manchester United. That's something that we have done already, so I thought let me get a neutral perspective of a quiz. But yeah, absolutely great to have everyone. Let me actually end that poll. तो मैंने पूछा था, apart from Barca's match, which of the game will be the one to watch in the round of Europa League? So ऑप्शन जो आप लोग हैं, सेविया वेस्ट हैम यूनाइटेड है। मीनवाइल देख ही लेते हैं क्या स्कोर हो रहा है बाकी मैचेस में जो चल रहे हैं अभी। पोर्टो लियोन तो 0-0 जैसे उस्मान भाई ने प्रेडिक्ट किया था, एंड बेटिस फ्रैंकफर्ट अभी तक 1-2 है विद अवे टीम विनिंग। So I can see वही एंड होगा। तो let's see, hopefully we'll get a good match come tomorrow as well Europa League में। But not just that, as we say, we're always here for you all. So do press that bell notification icon, because yes, that's the most important. हम videos भी upload करते हैं, and as I am about to end, let me big up 8744 great Barca fan in the house.
All the best for the Europa League match, buddy. And of course, he has a good channel, so do check it out, people. Just paralysis. I hope PSG wins. You can say that for PSG, it'll be the end of the world, right? In case they don't win, like trust me, everything will come to an end for them. That's how important it is. But yeah, it's Real Madrid, so you can never say never for Real Madrid. Interesting. अंकित भाई मजा आया, great discussion. Yes, absolutely भाई, आप लोग के कारण ही आता है, आप लोग join किया करो. And of course, do support our solo videos as well, our trivia shows, lot other playlists जो हम डाले. So check it out जब भी free हो. Well, this is bad news. Let's see. I'm not too sure if it's confirmed yet. लेकिन I am seeing some tweets around there. So let's see. Hopefully, yeah, he'll be back. I can only say that he's back for the future. This season, anyway, we're not expecting a lot, but yeah, Champions Leagues, I would say quarterfinals, if we get through Lille, which we should, Reece James is fit by then. But again, thank you, take care, and enjoy the game. See you at TCSP.